हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और जैसे कि हमारे विद्यालय का ये परंपरा है, कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत जब हम करते हैं तो अपने विद्यालय गीत के साथ करते हैं। तो आइए विद्यालय गीत प्रारंभ करने से पहले एक छोटा सा गुरु वंदना, उसके बाद विद्यालय। हमारे विद्यालय गीत को प्रारंभ करते हैं हमारे विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा। Thank you to all the participants over here. This is the first in-house training of this session. I would like to welcome our first resource person. He is Mr. Manindra Kumar Mishra from TAV School, and the second resource person, Mrs. Akanksha from New Horizons School. Joining us today are two schools. The first one is Arya Mission Global School English Falaka, and the second one is Ramakrishna Mission Vidya Ramachak. The topic of the training is effective teaching methods and methodologies.
Now, I would request our Honorable Director, sir, to greet and welcome the resource person with the bouquet. Ma'am, the first resource person. Thank you so much, sir. Now, the second resource person, Mr. Giving me time. Now, before starting the session, or respected the guests and my dear teachers, आज दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में आप सबों का दीक्षा परिवार की तरफ से बड़े बैठकर हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। टाइम तो बजाना चाहिए, इतना ही हो जाते हैं। जब तक आप एक दूसरे को सम्मान नहीं देंगे तब तक आपको सम्मान नहीं मिलेगा। आप अभी राष्ट्रीय सम्मान मिला आपको और इतना जल्दी भूल जाएंगे तो कैसे काम करेगा। ये गौरव की बात है कि हमारे लिए उन्होंने जो कर दिया ये बहुत हमारे सम्मान की बात है। आज हम जानते हैं इस बात को कि सम्मान देने पे सम्मान मिलता है। आज के दौर में आप सम्मान चाहते हैं और हम सम्मान कैसे ले सकें ये आप पे निर्भर करता है, क्योंकि आज आप हर दिन एक चैलेंज से गुजर रहे होंगे। जो भी शिक्षक स्टील क्लास में ले रहे होंगे 5 से ऊपर, उनको किस तरह का सामना बच्चों से करना पड़ रहा होगा ये आपको पता है, फैकल्टी को पता है। आज के दौर में प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल, बच्चों को पढ़ा पाना आसान नहीं है। ये हम लोगों का एक मौका मिला है आपस में सामंजस्य करने का, सोशल मीटिंग के द्वारा एक दूसरे को जानने को भी मिला है। तो हम लोग एक दूसरे को जाने, परखें और क्या क्या मेथोडोलॉजी अपना पाए जो बच्चों को हम सिखा पाए, करा पाए। ये एक बहाना है, एक सोशल मीटिंग, ताकि अपनी बात को शेयर कर सकें आप और सम्मान पा पाए, क्योंकि सम्मान देना पड़ेगा तभी सम्मान मिल पाएगा। आप जानते हैं कि दरिया में भी समुद्र जाग उठता है, मिले सम्मान पत्थर को गिरे सा तो पत्थर भी जाग उठता है। मेरे कहने की आज का बहुमूल्य समय दीक्षा में आकर दिया और हम लोग चाहते हैं आज 5 बजे तक आप हमारे साथ बैठना उठना खाना होगा। हम लोग मिलकर इस प्रोग्राम को अच्छे से अंजाम दें और दिन भर अच्छे से बिताएं, ताकि ऐसा ना लगे कि आज का दिन बहुत खराब हो गया, बहुत परेशान हो गए। आप इंजॉय करें और पूरी काम इंजॉय के साथ करें ना, आपको पूरी एनर्जी मिलेगी और कल आराम से अपने काम को अंजाम दे पाएंगे। धैर्य धरती से रखना होगा, तभी आप जी पाएंगे और आगे नहीं कर पाएंगे, करना होगा। यही एक मोरल वैल्यू हम लोगों के लिए हमने जबरदस्ती लिया है प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में आकर जबरदस्ती हमने अपना सम्मान बनाया कि मुझे टीचर बनना है, मैं हूँ टीचर। ये हमने जबरदस्ती चुना है और इसको अंजाम दिया प्राइवेट स्कूल वाले दे रहे हैं। अगर हम ना होते तो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस समाप्त हो गया होता। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारी माँ ना होती तो हम ना होते, इसी तरह प्राइवेट स्कूल ना होता तो एजुकेशन का ऑप्शन ना होता। ये मैं मानता हूँ, क्योंकि आज एजुकेशन अगर बचा पाया है तो प्राइवेट स्कूल बचा पाया है। थैंक यू वेरी मच। में आपको ये बताना है, आपका नाम बताना है और आप क्लास में क्या फेस करते हैं बच्चों के बीच में वो आपको बताना है, ठीक है। और तो कैसे डील करते हैं वो भी बताना है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, करें आपको नाम बताना है और क्लास में आप जाते तो बहुत First of all, my name is Shaku Shivan. When we go to class, while leaving before the teacher, while left the class is very shouting. They are making howling. So first we have to go to class and make them silence. First we have to prepare them for the class. पहले हम लोग उनको प्रिपेयर करते हैं, शांत कराते हैं, अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं what we are going to teach them. तो इस तरीके से हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले उन्हें शांत कराकर फिर टॉपिक के बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं कि वो क्या जानते हैं और वो उन्हें क्या बताने वाले। तो ऐसे हम अपनी क्लास को फिर करते हैं। थैंक यू मैम। मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी है
और फर्स्ट में जैसे मैं क्लास में इंटर करती हूँ तो ऐसे बच्चे तो मतलब ऐसे शॉर्टिंग वगैरह करते ही हैं, बट सबसे पहले उसको है कि आपको क्लास के लिए प्रिपेयर करना है, शांत करना है आपको, कि नहीं आपको फोकस लाना है कि नहीं जो भी आप पढ़ाने जा रही हैं उनको उस पर इंटरेस्ट आए कि आप क्या पढ़ा रही हैं नहीं पढ़ा रही हैं। तो इसलिए बच्चों को फर्स्ट में पहले बच्चों को शांत करना है कि बच्चे अभी आपकी तरफ आए, फोकस करें कि आप क्या पढ़ा रहे हो, उसके बाद आप टॉपिक को स्टार्ट करें ताकि बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आए और अच्छे से वो आपके क्लास को फोकस करें। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम शिल्पी गुप्ता है। मैं मैम के बात से एग्री करती हूँ। सबसे पहले आपको अपनी क्लास में जाने के बाद बच्चों से इंटरेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वो किस तरह से क्लास में आए हैं उनसे बातें करनी चाहिए, फिर अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको उनसे पूछना चाहिए, उन्हें क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उन्हें क्या दिक्कत आ रही है, और उनसे ये भी चीज़ देखना चाहिए कि वो उस चीज़ को अच्छे से याद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, नोट्स कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मैं इन सब चीज़ों को फॉलो करती हूँ, ध्यान देती हूँ। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, किसी कारण से वो अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उनसे इंटरेक्ट करके मैं उस प्रॉब्लम को दूर करती हूँ। एज अ बच्चों के साथ मैं फ्रेंडली माहौल भी चाहती हूँ कि बच्चे मेरे से इंटरेक्ट हो और मुझसे बातें करें, अपने प्रॉब्लम को शेयर भी करें और मेरे से अच्छे से पढ़े भी। सो थैंक यू सो मच। When I go to the class, the first thing कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या उनको जो भी चैप्टर हम उनको पढ़ा रहे हैं, जो भी लेसन हम उनको पढ़ा रहे हैं, उसको हम पहले बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हम ऐसा क्वेश्चन उनसे पुट करते हैं कि वो चैप्टर के बारे में जाने। दे आस्क कि हम ये जो क्यूरियोसिटी रहती है क्लास में कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, वो उस टाइप का कुछ उनसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं, उनसे ही आंसर निकलवाते हैं। देन वी स्टार्ट आवर टॉपिक। ऐसे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और उनके छोटे छोटे प्रॉब्लम को, चाहे वो कोर्स से रिलेटेड हो चाहे ना हो, इट्स आवर ड्यूटी टू सॉल्व। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, माय नेम इज अर्पुना चौधरी। मैं सबसे पहले क्लास में जाकर के ये पूछती हूँ कि कल जो मैंने आपको समझाया था वो आपको याद है कि नहीं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रिवीजन करवाना, कि रिवीजन जो आप लोग कल पढ़े वो आपको अगर आज याद नहीं है तो आगे बढ़ना वो वर्क नहीं करता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले रिवीजन करवाती हूँ, जो पहले आप लोग पढ़े हैं उसको, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ूँगी। थैंक यू। थैंक यू मैम। जैसे हम क्लास करने जाते हैं तो एक बच्चे से पूछते हैं क्या आप लोग सब ठीक हो, आज मुझे है पढ़ने के लिए। उसके बाद हम उससे पूछते हैं जो हम कल पढ़ाए थे क्या तुम लोग को ऑर्डर याद है या रिटर्न कर सकते हो। अगर बच्चे बोल देते हैं कि हाँ मैम हमें आज याद कर दिया है, ठीक है, तो फिर हम उसको बोर्ड पे लिखते हैं क्वेश्चन, उसके बाद बच्चे खुद लिख के दिखाते हैं। ओके, थैंक यू मैम। पहले मैं जाती हूँ तो पहले देखते हैं कि बच्चे कैसे बैठे हुए हैं, अरेंज करना है पूरा क्लास। उसके बाद तो बच्चे को इंजॉय करवा देना है कि अच्छे से मन से पढ़े। थैंक यू मैम। My name is Dilma Chaudhary. I take class in LKG class. First I take class, manage the class. छोटे बच्चों का क्लास को कैसे बच्चे बैठे हैं, बच्चे कैसे यूनिफॉर्म में आए हैं, मैं बच्चों को दिखती हूँ। उसके बाद बच्चों को कहती हूँ कि तुम आज जो पढ़े हो उसके बारे में जानो, और ऑन बोर्ड जब होती हूँ तो उसके बारे में फर्स्ट मैं जो लिखी हूँ उसको समझ रहे हो या ना समझ रहे हो उसको बताओ। देन योर टेक क्लास। मैं उसके पहले क्लास नहीं लेती हूँ, जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे अंदर कुछ नहीं जानोगे। पहले बेस जानो, बेस में क्या हुआ, बेसिक क्या चीज़ है। फर्स्ट आई टेक बेसिक क्लास, देन थैंक यू। मैम उसका सिलेबस पूरा हो जाता है? सिलेबस हो जाता है सर मैम, मेरा क्लास हो जाता है। मैं उतना 40 मिनट में बच्चों को इतना मैं इंटरेक्ट कर देती हूँ, बस उसके बाद मेरा स्पीड आता बच्चे कर लेते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज मंजू कुमारी। एज ए क्लास टीचर नर्सरी, और छोटे बच्चे को संभालना बहुत ही मुश्किल है। छोटे बच्चे अपने मन के ही करते हैं, उनको मतलब अपने तरफ अट्रैक्ट करके उनको बताना कि आप स्कूल आए, आपको पढ़ने भेजा गया, तो उनको सबसे पहले सीट पर बैठाना, उनको अरेंज करना, ये मेरा सबसे पहले जिम्मेवारी होता है। थैंक यू। थैंक यू मैम। एक्चुअली क्लासेस मेरा 7 to 10 होता है, तो जब क्लास में जाते हैं तो अभी जो बच्चे हैं
जो क्लास में होते हैं वो चाहते हैं कि पढ़ाई कम, इंटरटेनमेंट ज़्यादा वो प्रीफर करते हैं। और बेसिकली क्या होता है कि सर ने भी कहा था रिस्पेक्ट को लेके बच्चे को एक कहानी सुनाते हैं कि अगर आप अपने फ्रेंड का ही रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो कल दिन वही फ्रेंड आपको आपके घर भी नहीं बुलाएगा, और उसको ये लगेगा कि आप अगर गलत किसी और के लिए सोच रहे हो तो आप उसके फैमिली के लिए भी गलत सोच रहे हो, सेम थिंग। तो बच्चे को अच्छा लगता है। और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो जो भी होमवर्क देना होता है वो होमवर्क रहता है, जिसको नेक्स्ट डे प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चे को। एंड क्विज वगैरह जो स्मार्ट क्लास में दिया हुआ है एक्स्ट्रा मार्क्स में, उसमें बच्चे वो परफॉर्म करते हैं क्विज और बेहतर करते हैं। थैंक यू सर। अच्छा, क्विज कैसा करवाते हैं, मतलब अपने से ही करते हैं? नहीं मैम, वो दिया हुआ है, गिवन है ना, टॉपिक के अकॉर्डिंग। जैसे कोई पोएट्री सेक्शन है तो उस पर बेस्ड है। अब जैसे पोएट्री पढ़ा रहे हैं तो बच्चे सोचते हैं कि पोएट्री बस दिखा है और पढ़ना है, तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि पोएट्री जब पोएट लिखते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, वो उस समय जो फील कर रहे हैं वही फील भी करना होता है। अगर आप फील नहीं करेंगे उसको तो आप फिर कैसे समझेंगे? बस वो कहानी की तरह पढ़ेंगे तो वो फिर वेस्ट हो जाएगा। थैंक यू सर। My name is Kumar, and whenever I enter the class, I just try to steer the emotions of the student, enable them to concentrate and focus first, and create that type of conducive environment in the class. As a teacher, my motive is not only to teach them or narrate them, but to giving the demonstration with inspiration. Because it is my assumption, if I enable a student the curiosity, the acquisitiveness, they will find their food and water themselves first. What I know, I do not give full information. In my assumption, the teaching should be short enough to create an interest and long enough to cover the subject. And also not giving whole chunk of information so that they will be anxious and boring. So they find their knowledge, they find their subject matter, so that because they are acquisitive enough to meet, maybe create a storyline, okay, and the story, they just relate themselves to the story according to the subject, and they find their answer. And sometimes I challenge their intellectual capacity to think themselves. So this is my motive to teach math as a whole. Thank you. Thank you, sir. Myself, Kumar. I'm a senior teacher of 19 DIKSHA of SSC. एक्चुअली जब मैं क्लास जाता हूँ तो सबसे पहले बच्चों के अंदर ये देखता हूँ कि बच्चों के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट को विकास है। कारण है कि बच्चे जब इंटरेस्ट नहीं लेंगे पढ़ने में तो बच्चों को फिर पढ़ाने में मजा नहीं आता। इसलिए सबसे पहले मैं जो भी टॉपिक पढ़ाने जाता हूँ तो बच्चों के अंदर में ये इंटरेस्ट जगाता हूँ कि क्यों ये टॉपिक क्यों जरूरी है, इससे क्या आपका हो सकता है, इससे आपका क्या मेंटल डेवलपमेंट होगा, इससे आपका क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, इससे आप क्या समाज को, हमारे देश को क्या दे सकते हो। थैंक यू सर। सर, मैं क्लास में जाने कल क्या पढ़ाऊंगी उसके बारे में पहले बता दें, तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट से रिलेटेड हुआ उससे बच्चों को बता दें ताकि वो दूसरे दिन जब क्लास आए तो समझ जाए कि हमको क्या पढ़ना है, तो वो शुरू से ही अपने में एक्साइटेड रहते हैं उसको क्या पढ़ना और उससे इंटरेस्ट सर। ओके, थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मैंने भी आयाती झा और मैं सीनियर सेक्शन में इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। मैम, सबसे बड़ी समस्या ये है आज के इस समय में, डिजिटल युग में, क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं है। दूसरे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पहले से डिजिटल मीडिया के माध्यम से सारा जानकारी लेके पहले से वो तैयार रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमें एक ऐसा माध्यम चुनना पड़ता है जहां हम सभी बच्चों को अपने तरफ आकर्षित कर सके और वो क्लास में आपस में बातचीत भी नहीं कर पाए। इसके लिए हम नए नए तरीके अपनाने का प्रयास करते हैं।
जैसे कि आज वर्तमान समय में जो घटनाएं घट रही हैं सब्जेक्ट से संबंधित ताजा ज्ञान उसे देने का प्रयास करता हूं। इससे क्या होता है ना कि जो बच्चे पहले से जानकारी लिए हुए रहते हैं वह भी हमारी तरफ आकर्षित हो जाते हैं कि सर क्या बता रहे हैं, अगर नहीं सुन पाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात, मैं एक चीज और करता हूँ क्लास में बच्चे को आने के लिए कि मैं बच्चों से कहता हूँ कि देखो भाई, गुरु दक्षिणा में तुम्हें कुछ तो देना पड़ेगा। तुम्हें आज ये बताना होगा कि आज जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में, जो आज एब्सेंट हैं उनको आपको नोट्स नहीं देना है। इससे क्या होगा कि वो अगले दिन एब्सेंट नहीं होने का प्रयास करेगा। थैंक यू। Thank you, sir. Good morning to all. Myself, Chandran Abhijit from Ramkis Vidya Mandir High School, Rannuchar. Today, I am very grateful to share my own experience when I entered the classroom. First of all, I am teaching English language for senior section. Sir, all students are eager to know about to read and write literature. But when I entered the class, my first task to identify the problems and the needs of the students. I am trying to identify. I am also analyzing those needs and the problems. And later, I am just simplify, clarify those needs and one thing more. I would also like to pay attention to other classroom settings or the atmosphere, what is happening in the class, whether in the previous class too. And later, when I watch the classroom decorum, I am trying to begin my teaching. Thank you. Thank you, sir. गुड मॉर्निंग में सबसे पहले हम लोग को लेसन प्लान बनाना पड़ता है कि हम कौन सा टॉपिक पे पढ़ाएंगे, और उस लेसन प्लान में हम सबसे अधिक एग्जाम्पल ढूंढते हैं कि बच्चे को एग्जाम्पल अधिक से अधिक दे। और एग्जाम्पल देने के बाद क्या होता है कि बच्चे एक दो एग्जाम्पल जानते हैं, अगर 5-6 एग्जाम्पल जानते हैं तो इससे बच्चे थोड़ा ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। रही बात कि बच्चे को शांत, तो शांत करने के लिए सबसे पहले बच्चे के क्लास जाने के बाद उसके टॉपिक प्लस उस बच्चे को माहौल को देखना पड़ता है कि बच्चा किस उद्देश्य से शांत होगा। तो पूर्व का पढ़ाया हुआ अगर कोई पोयम हो तो एक दो बच्चे को उठा के, या न्यू वर्ड्स है, उस बच्चे को उठा के पूछ लिया जाता है, तो बच्चे कुछ परिस्थिति में शांत हो जाते हैं। उसके बाद जो टॉपिक हम लोग को पढ़ाना पड़ता है उस टॉपिक को हम पढ़ा देते हैं। थैंक यू। Thank you, sir. और मैं जूनियर क्लास में पढ़ाती हूँ। सबसे पहले मैं जब जाती हूँ क्लास तो बच्चों को पहले छोटी मोटी कुछ भी मोरल बातें बताती हूँ, जैसे बैग को किस तरह रखना चाहिए, या घर जाके बैग को अच्छे से रखना, अपने ड्रेस को अच्छे से रखना, ये छोटी छोटी बातें बताती हूँ। उसके बाद फिर मैं पढ़ाती हूँ, और अगर दूसरा तीसरा क्लास हो तो उसमें क्या करती हूँ कि बच्चे का जब मूड नहीं रहता पढ़ने का तो उसको कोई सॉन्ग छोटा सा सुनाती हूँ और उसको अपने साथ गाना गवाती हूँ, फिर उन लोगों का मूड हो जाता है और फिर मैं पढ़ाती हूँ। Thank you, ma'am. मैम मैं यूकेजी से मैम फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ाती हूँ। मैम मेरे क्लास में आके मैं ग्रीटिंग करती हूँ सारे स्टूडेंट को। इससे क्या है 2 मिनट का फ्रेश माइंड हो जाता है और इससे बच्चे को काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैं क्लास को जो मैं शांत करवाती हूँ ताकि बच्चे साउट नहीं करें। तो इसके बाद जो मैं टॉपिक पे आती हूँ तो हमें आज क्या पढ़ना है। उसके बाद फिर मैं जो है प्रीवियस नॉलेज चेक करती हूँ, उन्हें इसके बारे में कितना पता है कितना नहीं पता है। तो अगर टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है हमारे सब्जेक्ट का तो मैं ऐसे क्रिएटिव तरीके से मैं बता रहा हूँ, कोशिश करती हूँ ताकि मतलब अट्रैक्ट कर सकूँ, उन्हें बता सकूँ अच्छे तरीके से। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे टॉपिक स्टार्ट करती हूँ ताकि, और चारों में कोशिश करती हूँ मैं जितना उन्हें अच्छी तरीके से क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा सकूँ। एक स्टोरी बनानी है किसी भी तरीके से बनानी है वो बच्चे को काफ़ी पसंद आता है। तो उसके थ्रू मैं अपना टीचिंग जो है कंप्लीट करती हूँ। और इसके बीच में मैं डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो जो है साथ में ज़्यादा शाउट नहीं करें। तो उसके लिए बच्चे जो है काफ़ी कॉपरेट करते हैं मैम फ्रॉम स्टिक हेल्प मैम। तो मैम Thank you, ma'am. मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपको क्लासरूम में क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के बच्चों का दिमाग, वो कभी शांत नहीं रहता है और जाने के पहले सबसे पहले स्कूल का सामना करना पड़ता है। पहले उसको बैठाना पड़ता है शांति से। तो जो बच्चे
बच्चे बदमाशी करते हैं वो बच्चों को मैं आगे बढ़ा देती हूँ कि मेरे सामने बैठो और पढ़ो। दूसरी बात कि मैं जब चैप्टर पढ़ाती हूँ तो पहले जो पढ़ाई करती हूँ उससे कुछ क्वेश्चन करती हूँ। क्वेश्चन करने के बाद जान जाती हूँ कि कितने बच्चों ने पढ़ा है और कितने बच्चों ने अपने से पढ़ा नहीं। फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, उन बच्चों को एडवाइस करती हूँ कि भाई तुम थोड़ा ध्यान से पढ़ो, नहीं तो आगे जाकर तुम्हें बहुत परेशानी होने लगती। तो ऐसे स्थिति में बच्चे थोड़े से डर जाते हैं और फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। दूसरी बात, जैसे मैं अभ्यास शुरू करती हूँ क्योंकि मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ, तो चैप्टर को जैसे शुरू करती हूँ क्योंकि हर लाइन को सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि हर लाइन में तुमको एक क्वेश्चन बनाना है और अपने से आंसर भी देना है। जैसे वो क्वेश्चन बनाएंगे तो स्वतः ही आंसर उनके दिमाग में आएगा। पहले आंसर, बाद में क्वेश्चन आता है और इस तरह पूरे चैप्टर उनको याद हो जाएगा। हर लाइन के साथ क्वेश्चन है। एक चैप्टर में कम से कम अपने से तुमको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 100 बनाना है और वो 100 बनाएंगे तो वो बच्चा को पूरा चैप्टर याद होता है। मेरा ये है कि बच्चे पढ़ें और जो बदमाश बच्चे रहते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि पढ़ते ही, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ बच्चे अपने पेड़ को भी नहीं लाते और उस समय हमें परेशानी होती है जब मैं चेक करने बैठती हूँ तो उनको पनिशमेंट के रूप में बाहर खड़े करके या फिर उसी रूम में बैठा करके कॉपी निकलवा करके उसे बनवाना शुरू करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि चलो तुम्हें एक अलग से कॉपी देती हूँ, तुम उसमें बैठ के करो, लेकिन थैंक यू मैम। सुनिए, मैं क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस उम्र में ना बच्चे ज़्यादा छोटे होते हैं और ना ज़्यादा बड़े होते हैं, तो उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले क्लास में जाते ही सबकी मजाक मस्ती आपस में चलती रहती है, तो माहौल बनाने के सबसे पहले वो जो मजाक कर रहे हैं उसमें आप इन्वॉल्व हो जाओ, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस टॉपिक पे बात कर रही है। फिर उससे हम लोग फिर टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, मजाक मस्ती हो गया, अब क्लास शुरू करते हैं। उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले पूछती हूँ कि इस बारे में कुछ पता है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, दिल्ली सल्तनत है तो उसके बारे में क्या कभी पहले जानते हो, इस राजा का नाम सुना है, नॉवेल्स के बारे में जानते हो या नहीं। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों को पता होता है, कुछ को पता नहीं होता है, और खास करके जो आपस में पीछे जो बैक बेंचर्स होते हैं सबसे पहले काम होता है उनको फ्रंट बेंचर बनाना, क्योंकि पीछे बैठ के बात करने के अलावा कुछ नहीं करते। फिर आगे आते हैं, सबका सीट चेंज करना पड़ता है, उसके बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, तो फिर पूरा चैप्टर समझाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी कोई प्रोवाइड करते हैं जो बच्चे बना सकते हैं। मेरे तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता कि मैंने जो लिखवाया है आप वही लेकर के आओ। बच्चे जो अपनी तरफ से भी लेकर आते हैं वो मुझे दिखाते हैं, सही होता है तो उस हिसाब से मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से, और क्लास 11-12 में भी एग्जाम्पल्स के साथ उन्हें इकोनॉमिक्स नया सब्जेक्ट है तो उनके साथ एग्जाम्पल्स के साथ मार्केट के बारे में, प्रॉफिट कंपटीशन, मोनोपोली, जीडीपी, ये सब के बारे में बताया। थैंक यू मैम। सबसे पहले क्लास में तो अपनी अच्छे से स्माइल लेके जाना पड़ता है बच्चों के सामने। छोटे छोटे बच्चे वो आपको देखेंगे तो वो भी स्माइल करते हैं, और मैं जो बच्चे को पिछले दिन जो पढ़ाई में रहती हूँ सबसे पहले मैं बच्चों से पूछती हूँ कि आपने जो कल पढ़ा उनसे आपने क्या सीखा। ठीक है, आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ मुझे ये बताइए कि आपने नया क्या सीखा, वो पूछती हूँ। और उसके बाद फिर बच्चों को बस छोटी छोटी बातें बताती हूँ। आप पहले पढ़ो, जिस चीज को आप पढ़ते हो उसको दोबारा लिखो और लिखी हुई चीज को फिर पढ़ो, और जितना पढ़ोगे दूसरे के सामने बोलने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना है। बच्चे करते हैं, हाँ बच्चे, कुछ बच्चे करते हैं, सारे बच्चे तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ये करते हैं और बच्चे हंसी खुशी करके मुझे बताते भी हैं। हाँ, मैंने कल जो आपने मुझे पढ़ाया छोटी छोटी ही बातें वो बताते हैं, लेकिन वो बच्चे अच्छे से बताते हैं। अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे को बताना शुरू कर देता है या मुझे बताना शुरू कर देता है तो पीछे वाले बच्चे को भी सोचना पड़ता है कि मैं मेरे से पूछ सकती है कि कल मैंने नया क्या सीखा है, तो मुझे बताना होगा। तो वो छोटी छोटी बात कंप्लीट करवा देंगे। हाँ, 2 मिनट का, बस ज्यादा नहीं, 2 मिनट का क्लास होता है, क्लास कंटिन्यू करवा बस। थैंक यू मैम। मेरा नाम सुनीता कुमारी वर्मा है। मैं 1 से लेकर 8 तक पढ़ाती हूँ। जब मैं क्लास आती हूँ मैं तो सबसे पहले
बच्चे लोग को अपने को आकर्षित करके उसको पहले जो पढ़ाया हुआ है उसको मैं पूछती हूँ, उसके बाद क्या क्वेश्चन मैं लिखाई उसको सुनती हूँ। अगर जो बच्चे याद नहीं किए हैं उसको खड़ा करती हूँ और मैं याद करवाती हूँ सारे बच्चे से। पहले मैं लेसन प्लान बनाती हूँ, लेसन प्लान के अनुसार मैं उसे पढ़ाती हूँ। पहले कठिन सर हिंदी दें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर और सारे बच्चे को मैं एक तरफ से याद करवाती हूँ। अगर बच्चे थोड़ा याद कर लेते हैं, थोड़े बच्चे जो बच्चे याद नहीं करते हैं, जिस बच्चे से मैं सुन रही हूँ जो बच्चे नहीं कर पाए हैं उसको भी मैं करवाती हूँ और बच्चे याद करके आते हैं। थैंक यू मैम। मैम मैं प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाती हूँ, LKG UKG के बच्चे को पढ़ाती हूँ और जब बच्चे शुरू में आते हैं तो बहुत रोते हैं, तो रोते हैं तो उनको एक ही गाना सुनाती हूँ, जीना है तो हंस के जियो। दूसरे दिन वही बच्चा, जब दूसरा बच्चा आता है नया बच्चा तो वो रोने लगता है, तो वही बच्चा वो गाना गा के उसको सुना देता है, तो उससे उसका मनोबल बढ़ जाता है कि नहीं मेरे साथ और भी है। और धीरे धीरे मैं उस बच्चे को ऐसे अपने घर के माहौल में ढाल देती हूँ कि वो बच्चा रोना छोड़ देता है। और जब हम मैथ पढ़ाते हैं, जब हमको बिफोर या आफ्टर बिटवीन देना होता है तो मैं ऊपर से, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद, बिटवीन मतलब बीच में होता है, तो उसको मैं जैसे लिखती हूँ 2 के बाद क्या आएगा तो वो बच्चा पकड़ नहीं पाता है, तो मैं सीरियली लिख देती हूँ 1 2 3 4 और उसके बाद बोलती हूँ 2 के नीचे क्या है या 2 के ऊपर क्या है, इससे तुम पकड़ो। इससे क्या आता है बच्चा धीरे धीरे पकड़ लेता है और एडिशन रहे सब्सट्रैक्ट रहे इसी फॉर्मूले पर मैं सिखाती हूँ। RKBN स्कूल मैं संस्कृत का शिक्षक हूँ। 10th षष्ठ वर्ग से 10वीं वर्ग तक मैं चाहता हूँ व्याकरण हो या साहित्य हो, व्याकरण कुछ साहित्य से क्लिष्ट तो है, लेकिन अगर व्याकरण में जो पाठ हम आज शुरू किए, लगता है कि व्याकरण में समय खपत हो रही है विशेष, लेकिन व्याकरण एक ऐसी विषय वस्तु है, अगर हम आज जिस पाठ को पढ़ाया और उस पाठ को हम लगातार बढ़ाते चले तो व्याकरण में प्रगति नहीं होगी। व्याकरण का ढेर सारा टॉपिक है, इंग्लिश का अलग है, हिंदी का अलग है, संस्कृत का अलग है, लेकिन पाठ 1 में जो व्याकरण है, पाठ 2 में जो व्याकरण है, ऐसे ऐसे बच्चे बहुत हैं कि जैसे कि मैं पाठ 1 में अगर लकार विषय वस्तु है तो लकार से संबंधित, अब सीधा वर्ग में गए लकार के बारे में समझाना शुरू कर दिए तो लकार से बच्चे प्रभावित नहीं होंगे। लकार क्या चीज है, लकार का प्रयोग व्याकरण में क्यों हुआ, पाणिनि महोदय लकार का प्रयोग क्यों किया, ढेर सारी विषय बिंदु है जो बच्चों को पहले मोटिवेट कीजिए कि बिना लकार पढ़े आप व्याकरण से पीछे पड़ जाओ। तो जब हम हर विषय बिंदु पर पहलू डालते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जैसे कि आज हम पढ़ा के निकले बिना अगर वर्ग में जाते हैं तो बच्चे की जो संख्या है कुछ न कुछ सकारात्मक उत्तर हमें प्राप्त होती है। अब साहित्य की बात बची तो साहित्य में जो पाठ है, जैसे कि साहित्य में पाठ है पर्यावरणम, तो पर्यावरणम पाठ से बच्चे पहले से भी अवगत हैं। पर्यावरण क्या चीज, पर्यावरण हम कैसे अपने आप को बचाएं,
ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसे करते हैं ठीक है सर? फॉर क्वेश्चन कैसे करते हैं? तो कंप्यूटर में तो बहुत कम बच्चे सबका उपयोग होता है, बट बोल चाल की भाषा जैसे हम लोग कभी कुछ भी वर्ड यूज किए तो अभी कन्फर्म याद नहीं है मुझे, मगर जैसे मैं बोलता हूँ जब भी तो कुछ ना कुछ बोल चाल की भाषा में हो ही जाता है कि पर्यायवाची शब्द का उपयोग कर लेते हैं। कंप्यूटर में तो ऐसा नहीं होता, मगर कोशिश है। आप लोग हर सब्जेक्ट में पर्यायवाची से सिर्फ किताबों में नहीं लेनी चाहिए, सारे सब्जेक्ट में अगर हम लोग यूज करेंगे तो नया नया वर्ड बच्चों को मिलेगा, है ना। अगर हम उनको बोलेंगे कि आपको ये वर्ड मिला है, आप इससे और ढूंढ के लगे, वो तो मोबाइल यूज करते ही, तो यहाँ पे क्या होगा, उनको यहाँ पे एजुकेशन ज्यादा अच्छी तरीके से मिलेगी, राइट। तो एक वर्ड का अगर 2 वर्ड भी उन्होंने कहीं से भी अगर उन्हें सीखा तो हमारे लिए वो अचीवमेंट होगा, है ना। ये चीज हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और था कि सारे स्कूल्स में हम लोग ये देखते हैं कि नर्सरी केजी में सिर्फ लेडीज ही पढ़ती, लेडीज गर्ल्स, ऐसा क्यों? मैं पहले जेंट्स सेकेंडरी से पूछूंगी, पीछे से मैं पूछूंगी कि नर्सरी फीमेल टीचर तो बताएंगे सर, नर्सरी केजी में मेल टीचर फीमेल मतलब फीमेल टीचर आपने देखा है? फीमेल टीचर इसलिए क्योंकि बच्चे का जो इमोशन है, मेल टीचर उसके इमोशन पर सही तरीके से खड़ा नहीं उतर पाते हैं, इसलिए फीमेल टीचर उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। बच्चे के लिए फीमेल टीचर इसलिए सूटेबल ज़्यादा है, उसका जो इमोशन है उस इमोशन पर मेल टीचर सही तरीके से उसके इमोशन पर खड़े नहीं उतर पाते हैं, जुड़ नहीं पाते हैं हर्टली, मेंटली, फिजिकली, इसीलिए मेल टीचर नर्सरी के लिए ठीक। नर्सरी केजी में फीमेल टीचर ही क्यों, मेल टीचर बोले जो इतने शोर मचाते हैं, परेशान करते हैं, तो फीमेल टीचर उनको अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। First teacher for each and every kids, and mother has more sense of caring, so that's why each and every kids wants to learn through female teachers. Thank you. Okay, thank you sir. लगता है और ये मेरे टीचर में पेशेंस नहीं होता है। इस तरह से घर में बच्चे अपने सब कुछ माँ से ही कर सकते हैं और माँ प्रेम से उसे समझा सकती है, लेकिन अगर पापा से कहेंगे तो पापा डांट भी सकते हैं। इस तरह से बच्चे क्लास में अगर रहेंगे भी तो अगर कोई जेंट्स टीचर है तो पूछ भी नहीं पाएगा कि हमको ये चीज़ नहीं आता है, वो चीज़ नहीं आता है, लेकिन ये फीमेल टीचर्स को गोद में बैठा कर भी इतना पढ़ना सब सिखाते हैं, इसलिए फीमेल टीचर ज़्यादा जरूरी है। छोटे बच्चे को जब पढ़ाती हैं तो वो मदर टीचर हो जाती हैं और उसको बच्चे को ये नहीं लगता कि वो मेरा स्टूडेंट है, वो अपना बच्चा दिखाई पड़ता है उसको और प्यार से पढ़ाता है, गोदी में बैठा के पढ़ाता है। वो अगर रोने लगता है तो गोदी में 1-2 दिन की लत उसको ऐसी लगती है कि लगता है कि मम्मी का आंचल छोड़े और कोई टीचर ऐसा आंचल हमको दे दी कि जिससे हमको दिक्कत नहीं है, यहाँ हमको माँ मिल गई। इसलिए फीमेल टीचर की कोई जूनियर सेक्शन में दिया जाता है। पेशेंस उतना ही होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे छोटे बच्चों को संभालना है, वहाँ पे
जो है लेडीज के पास में पेशेंस ज़्यादा होता है, कारण कि उनको पता है कि घर में कैसे देखना है, वो घर के माहौल के साथ अडेप्ट करती है। लेकिन यहाँ पे बात आता है पेशेंस का, तो अगर हम चाहे वो जेंट्स टीचर हो या आपका फीमेल टीचर हो, दोनों के पास में पेशेंस रहता है। लेकिन अब बच्चों के साथ आप फ्रेंडली नहीं है तो फिर आपके पास फीमेल टीचर की वहाँ पे आप यूजलेस हो जाएंगे। इसीलिए वहाँ पे बच्चों के साथ सबसे पहले फ्रेंडली होना जरूरी, तभी वो बच्चे आपसे अपनी बातों को शेयर करते हैं। टीचर भी छोटे बच्चे को रख सकते हैं। दिल्ली में बात ऐसी होती है कि जब बच्चा सबसे पहला शब्द बोलता है तो माँ सबसे यही फीमेल और मेल के साथ हो रहे हैं। होता है घर में वो माँ सब ही बोलता है। और जहाँ तक हमारा सोचना है कि जब छोटे बच्चे हमारे LKG या प्री नर्सरी में आते हैं तो उन्हें माँ का फील होता ही रहे, क्योंकि चूंकि वो माँ के साथ ज्यादा समय बिताते हैं घर में, तो इसीलिए मदर टीचर को सबसे पहले लिया जाता है। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं मेल टीचर भी कर सकते हैं ऐसा काम, ऐसी बात नहीं है मैम, मेल टीचर भी कर सकते हैं और हम लोग बखूबी करते भी हैं। जब हम लोगों के स्कूल में कोई जूनियर सेक्शन की कोई शिक्षिका एब्सेंट हो जाती है तो हम लोगों को भेजा जाता है मैम, और हम लोग अच्छी तरीके से कहानी सुना के खेल के माध्यम से खुद भी डांस करके उसको दिखाते हैं और हम भी उस बच्चे को शांत करते हैं। इसीलिए हमारी जो इससे पहले जो हमारी प्रिंसिपल मैम थी, उन्होंने हमें बड़ाई भी हमारी की थी और बोली थी कि आप छोटे बच्चे के साथ बहुत अच्छे तरीका से रहते हैं और पेरेंट्स भी हमारे स्कूल फोन करते हैं कि आपके जो टीचर हैं वो छोटे बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं। तो ऐसा नहीं है मैम, मेल भी छोटे क्लास के बच्चे को चला सकते हैं। फीमेल भी कर सकती है, मेल नहीं कर सकती, ये पुराना ध्यान है। अब जैसे कि आप घर में देखिएगा, बच्चे सबको लगता है माँ से ज्यादा प्यार करते हैं, बार बार थैंक यू कहते हैं। पापा को कोई थैंक यू नहीं कहता, नहीं कहता है, नहीं कहता है ना, कहता है, ठीक है, क्योंकि पापा भी डिजर्व करते हैं, वो भी उतना ही काम करते हैं, जेंट्स फैकल्टी भी उतना काम करते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं ना कि वो उस टाइप से एक्सप्रेस नहीं कर पाते बच्चों को, इसलिए बच्चे नहीं समझ पाते। क्योंकि अगर वो पापा नहीं रहेंगे, अगर वो घर के जेंट्स नहीं रहेंगे तो वो घर पूरे तरीके से नहीं चल पाएगा। सिंगल पेरेंट से घर उतना अच्छे से नहीं चल पाता है, लेकिन कंडीशन कभी कभी हो जाती है ना, इसलिए दोनों जरूरी है। अगर मेल टीचर्स को भी अगर दिया जाए अपॉर्चुनिटी तो वो भी बखूबी निभाएंगे, ठीक है। तो ये धारणा मन से निकाल दीजिए कि दे हैव नो पेशेंस, दे हैव पेशेंस। अगर वो टीचिंग लाइन में है तो इसका मतलब उनके पास पेशेंस है, ठीक है। इस चीज को मतलब बहुत सारी चीजों को हम लोग को क्या करना है ना, पुरानी धारणा को निकालना है। अब यहाँ पे हमने एक धारणा बना लिया फीमेल टीचर्स के बारे में, है ना, कि नर्सरी के उन्हीं को दे दिया जाए, लेकिन अगर यही चीज अगर आगे चल के हो जाए तो बच्चों में भी देखा जाता है। अभी देखिए यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, फीमेल अलग है, मेल अलग है, मिक्स होके बैठे हैं क्या। जब हम लोग ऐसा करेंगे तो फिर बच्चे क्या करेंगे, है ना, वो भी उम्र से पहले बड़े हो जाते होते हैं कि नहीं, है हमारे, वो भी बड़े हो जाते हैं उम्र से पहले। अगर आप किसी चीज को, एक बच्चा था, मैं वो थोड़ी सी कहानी की बात समझा रही हूँ। एक बच्चा था, वो बार बार लैंप को छूने के लिए दौड़ जाता, उसको पकड़ के लेके आए थे, बार बार उस लैंप के पीछे दौड़ता था और मम्मी पकड़ के लेके आती। उसको ये नहीं पता था कि जल जाएंगे, तो ये बच्चा था और मम्मी को ये पता था जल जाएंगे, लेकिन लास्ट उसकी मम्मी तन आगे छोड़ दी जा। अब देखो क्या होगा, तो जैसे वो लैंप को छुआ उसको समझ में आ गया, अब वो जब भी वो लैंप देखे तो बच्चा भाग। मतलब ये, अगर आप जिस चीज से बच्चों को अलग करने की कोशिश करेगा, बच्चे का इंटरेस्ट उसमें ज्यादा जगेगा, है ना। तो इस चीज से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे। तो इस धारणा को छोड़ दीजिए, और अगर लाइफ में कभी भी अपने किसी भी चहेते इंसान को आपने थैंक यू नहीं बोला है, तो आज ये होमवर्क रहा कि आप उनको थैंक यू बोलिए, ताकि आप ये करिएगा तो बच्चे भी करेंगे, है ना। तो आज जब आप थैंक यू करिएगा तो उसके बाद अगर मैं जब भी आपसे मिलूंगी इस बारे में पूछूंगी कैसा फील हुआ, ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीज था जिसमें मैं आपको फोकस कराना चाह रही हूँ, ठीक है। अब मैं सर को हैंड ओवर कर रही हूँ।
Good morning, everyone. From my point of view, I think that teachers are made. Teachers are not born. Teachers are made by the hard work and the discipline life. Whatever the profession anybody want to go through, I think that if anyone want to do teaching, then he must be interested in that way. Means आपका उसमें ध्यान बहुत अच्छे से होना चाहिए, आपको इस प्रोफेशन में ही जाना है। टीचिंग इज बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत नोबल प्रोफेशन है, तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन लाइफ हो, हार्ड वर्क हो, ये करना ही है हमको, तो उसमें आपका नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि आपको मतलब पहले से जन्मे हैं टीचर में, ऐसा नहीं होता है। हार्ड वर्क, डिसिप्लिन जो भी आप देख के सीख रहे हैं वैसे होता है, ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से बन के आए हो, ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू। हम लोग ये सोचते थे कि सर ये नहीं सोचें कि हम लोग को कुछ आता नहीं है, सर बताएं, हम लोग पहले बताएं, फिर उसको मतलब ये नहीं समझें कि नहीं इसको आता ही नहीं तो इसको बताने नहीं आगे बढ़ जाते हैं, तो ये हम लोग नहीं करना चाहते हैं। फिर जैसे हम लोग हम लोग बात करे थे कुछ दिन पहले कि जब हम लोग क्लास में बैठते थे रिवीजन पूरा राइटिंग लिख रहे हैं कि नहीं कंप्लीट करके दिखाना है, तो बच्चे लोग उसी में रह जाते हैं। तो अच्छे टीचर तब बनते हम लोग जब हम लोग अपने टीचर को देखते हैं, अरे वो ये कर रहे थे तो नहीं हम लोग ये नहीं, कुछ अच्छा करके कुछ और इंटरेस्टिंग करके दिखाएं, तो उससे अच्छे टीचर बनते हैं। नॉट गॉड, ठीक है, क्योंकि जैसे कि हम अपने अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स लेकर के आते हैं, ठीक है, कि बच्चे खुद भी फ्री होकर के अपनी बात हम तक रख सकें। ये स्किल्स हम अपने अंदर लेकर के आते हैं। पढ़ाने का तरीका, अलग अलग टीचिंग मेथड्स हम लेकर के आते हैं, चाहे वो प्लेइंग मेथड हो, लर्निंग मेथड हो, डेमोन्स्ट्रेशन हो, लेक्चर देना हो, ये सारे मेथड्स के थ्रू टीचर बनते हैं। हम अपने आप को टीचर बनाते हैं ये सारे मेथड्स को यूज करके, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि हमारा जो इम्पैक्ट है वो बच्चों पर कैसा पड़ रहा है, अच्छा पड़ रहा है, बुरा पड़ रहा है हमारे तरीकों से। तो हम लोग बच्चों को ये ध्यान दिलाएं कि भाई हम लोग भी जब बच्चे थे तो बहुत सारी गलतियां करते थे, और कोई भारी बात नहीं कि आप नहीं जान रहे हो, हम लोग भी इसी तरह थे, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते उनको ये भरोसा दिलाना, तो यही ठीक है। थैंक यू। इसमें दोनों बातें सही हैं। कभी कभी कुछ जो मतलब एक कंजेनिटल आदमी में कैरेक्टर होता है जो बचपन में एक साथ आता है, और कुछ जो ट्रेड्स हैं लोग उसको एक्वायर भी करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल है, एम्पैथी है, पेशेंस है, ये सारे बायबॉर्ड वर्चुअल्स हैं जिससे कि आदमी ज्यादा इंट्यूटिव हो पाता है और वो सामने वाले के लिए ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रखता है, उसको समझ पाता है। आई थिंक सो। और कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जिसे एक्वायर किया जा सकता है, जैसे टीचिंग स्ट्रेटेजी है, मेथड्स है, वी कैन एक्वायर। सो आई थिंक इन बोथ वे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री समटाइम्स, बिकॉज कुछ चीजें, कुछ लोग जन्म से महान होते हैं, कुछ महानता अर्जित करते हैं और किन्हीं पे महानता थोप दी जाती है। थैंक यू। मैं इसी बात को पुनः फिर से स्ट्रेस दूंगा कि दोनों बातें सही हैं। सम और अबाउट ग्रेड, मैं नहीं समझता हूँ कि आचार्य चाणक्य ने किसी भी ट्रेनिंग कॉलेज से ट्रेनिंग की हो, मैं नहीं समझता। उनका स्वभाव, उनका नेचर, उनका एजुकेशन, उनका जो एटीट्यूड है वो एक टीचर वाला है, वो एक बॉर्न टीचर है और वो उसमें पूरे 100% सक्सेसफुल है। तो वहाँ पर यह है कि वो इन्वॉल्व है। हाँ, समय बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, वातावरण बदलता है, सिस्टम बदलता है, सिलेबस बदलता है, क्लासेस बदलते हैं, बहुत सारी चीजें समय के साथ चेंजिंग वाटर टाइम चेंज होती है, उसके अनुसार हमें स्किल्ड होना होता है। इसकी इन्हेंसमेंट एक प्रोसेस है, वो जरूरी है। इसलिए दूसरी वाली बात है कि आर मेड वो ज्यादा स्ट्रांग दिखती है। तो क्योंकि हम समय के साथ अपने आप को अगर अपडेट नहीं करेंगे, मेरे पास में मोबाइल है, मैं मोबाइल में अगर अपडेट नहीं करूँ, उसको उसकी फ्रेश वर्जन अपडेट नहीं करूँ, तो मेरा मोबाइल हो सकता है हैंग करने लगे। तो एवरीबडी नीड्स अपडेट, सबको अपडेट चाहिए। आप अगर इन्वॉल्व भी हैं तो भी आपको अपडेट होना ही पड़ेगा। तो द सेकंड स्टेटमेंट गेट्स रॉन्ग। I think sir,
कि दोनों चीजें हो सकती है ना, कि बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि बहुत लोग होते हैं जो नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन जो पढ़ाने का तरीका होता है, बच्चों को समझाने का तरीका होता है ना, वो सारी चीजें वो नहीं कर पाते। भले उनके पास नॉलेज बहुत सारा है, लेकिन अगर उसको समझा नहीं पाए बच्चों को, तो टीचर का काम तो यही कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझा सके। तो नॉलेज तो है, अच्छी बात है, लेकिन अब बहुत सारी चीजें होती है जो समझाने का तरीका होता है, जो पढ़ाने का तरीका होता है ना, तो वो सारी चीजें, बहुत सारी ट्रेड्स हैं जो कि कुछ लोगों में पहले से होती है। भले वो ज्यादा नॉलेजेबल ना, ऑब्वियस सी बात है कि टीचर होने के लिए नॉलेजेबल होना जरूरी है, लेकिन भले ज्यादा नॉलेजेबल हो, लेकिन पढ़ाने का जो तरीका होता है वो चीजें जरूरी है। तो इन जनरल मैं एग्री करता हूँ कि दोनों चीजें हो सकती है, जो बॉर्ड होते हैं, ट्रेड होते हैं। और अभी के समय में जनरली अगर खास करके चाइल्ड सेंट्रिक टीचिंग मेथड जो अभी अपनाया जाता है, उसमें हम लोगों को बच्चों को साइकोलॉजी के अनुसार जो पढ़ाया जाता है कि बच्चे किस तरह से पढ़ना चाहते हैं या क्या चीजों का इंटरेस्ट है, क्या उसका नीड है, ठीक है, तो वो सारी चीजों को सीखा जा सकता है। तो दोनों चीजें हो सकती है, मैं भी एग्री करता हूँ। कि घर में जब छोटे बच्चे आते हैं ना, ठीक है, तो उनको पेरेंट्स बोलते हैं अरे तुम डॉक्टर बनना है, अरे तुम इंजीनियर बनोगे, तुम सीए बनोगे पक्का। फिर बेचारा अगर किसी पार्टी में गया, किसी दूसरे के यहाँ गया, अरे तुम्हारा तो लग रहा है कि तुम जो है स्टैटिस्टिशियन बन जाओगे। मतलब बच्चा कंफ्यूज, करना क्या है लाइफ में, करना क्या है ना। सर हम लोग में भी तो सेंस जो कंफ्यूज होंगे कि लाइफ में करना क्या है, क्लास में टीचर बन गए, हमारा है ना। तो होता यही है कि बच्चे को कंफ्यूज कर दिया जाता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, तो पहले कहावत थी कि पालने में पैर दे करके बच्चों को बता दिया जाता था कि बच्चे बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे, तो बीपीएससी करो, तो बीपीएससी करो। बच्चों से कहीं पूछा है बच्चे क्या करना चाह रहे हैं, ये तो थोपा जा रहा है ना। और लास्ट में वो क्या करेंगे, एक वीजा बेटर जिंदगी जीना स्टार्ट कर देंगे। लास्ट में ही पोजीशन रहेगा, क्योंकि उनके पास वो उम्र नहीं रहेगी जहाँ पे वो अचीव कर पाए। तो यहाँ पे हमारा भी एक रूल है, जब आप लोग पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है, तो यहाँ पे आप लोग पेरेंट्स को समझाएं। मान लीजिए सब्जेक्ट्स में अच्छा ना हो सकता है गेम्स में अच्छा हो, है ना, हो सकता है उनकी थॉट अच्छी हो सकता है उनका इंग्लिश बहुत अच्छा हो, किसी का हिंदी बहुत अच्छा लगता है, मैथ्स वीक रहता है, साइंस वीक रहता है, तो जैसे आके कंप्लेन करना स्टार्ट हो जाता है। नहीं, उनको समझाइए और इस चीज को अपडेट करिए कि अगर जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट दे रहे हैं, उससे क्या क्या वो बन सकते हैं, ताकि पेरेंट्स को बस एक लिमिट चीज नहीं पता है, डॉक्टर इंजीनियर सीए वॉटेवर जो चल रहा है, सो ऑन MBA जो चल रहा है। लेकिन अगर आप नया नया चीज को अपडेट खुद में करके बताते हैं, तो मे भी वो बच्चा बहुत आगे है, वो थोपने वाली स्थिति नहीं रहेगी। बचपन से उसका एक एम रहेगा कि मैं यही बनूंगा, चाहे कोई कुछ बोले, मैं ये बनूंगा, है ना। तो ये चीज भी आपको थोड़ा ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो एक टीचर ही ऐसे होते हैं जो बच्चों का पूरा डिटेल दे देंगे, है ना। हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं जन्म कुंडली ही दे देंगे, तो एक टीचर ही दे सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं करते, ठीक। वो एक टीचर ही ऐसे हैं जो हर बच्चे के बारे में बता सकते हैं। तो आप यहाँ पर गाइड कर दीजिएगा, तो आपकी क्लास का बच्चा बहुत ही अचीव कर पाएगा, वो एक अच्छे मुकाम तक पहुँच पाएगा। तो ये छोटा सा करते हैं, तो मे भी आपकी क्लास में भी सक्सेसफुल बच्चों की लाइन लग जाएगी। वो जो बैक बेंचर जो हल्ला करते हैं, वो भी एक दिन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेकर के पढ़ाई करने लगे, क्योंकि हमारे टीचर्स हमारे साथ हैं। क्योंकि अभी के टाइम में ना उनके साथ कोई नहीं होता जो फैक्ट है। स्कूल आते हैं, पेरेंट्स ट्यूशन लगा देते हैं, बेचारा खाते नहीं, कि वहां पे स्टार्ट हो जाते हैं पढ़ना। वहां से हटते हैं, माँ के पास गए, तो अभी घर में जो भी बड़े लोग हैं उनके पास गए, वो लोग ले बेटा एक काम करो ना, मोबाइल को साथी से बैठ जाओ। फिजिकल वर्क होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रूफ दिया जाता है कि मोबाइल लो और आराम से, मेरा सर मत पकड़, आराम से देखते रहो। फिजिकल वर्क
निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर भी आपको पेरेंट्स को ये बताना होगा कि थोड़ा फिजिकल वर्क इंक्लूड करने की चीज, घर से थोड़ा बाहर जाएंगे, खेलेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ज्यादा वो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो वो भी इफेक्ट देता है, वो भी बुरा इफेक्ट देता है, बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट करता है। अभी छोटे बच्चों को भी देखिएगा स्पेक्स लगा हुआ है ना, उनको बैठने में प्रॉब्लम होती, बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ गया बच्चों का, शुगर बढ़ गया, कुछ भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल वर्क करते नहीं। हमारे टाइम में क्या था, और घर में भी ये सुनने को मिलता है, हम लोग को ये कहते थे तुम क्या करते हो, अरे आप तो खेलते भी थे, है ना। तो बेचारे कहाँ बदमाशी निकालेगा, स्कूल में, क्योंकि उनके वहाँ पे फ्रेंड्स रहते, घर में कौन है फ्रेंड, मोबाइल है, फिजिकल वर्क नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो है फिजिकल वर्क बहुत ही जरूरी है, ये पेरेंट्स को समझाना होगा, ताकि क्या हो, आगे का जनरेशन ग्रोथ करे, ना कि बीमार हो। अगर हेल्थ अच्छी होगी तो वो आगे ग्रोथ कर पाएंगे, हेल्थ अगर अच्छी नहीं होगी तो वो हेल्थ के इशू में फंसे रह जाएंगे और आगे डेवलप नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो इस चीज के लिए आप लोगों को थोड़ा सा वहाँ पे, आप लोग भी पेरेंट्स नहीं, सेकेंड पेरेंट्स आप लोग हैं, टीचर्स हैं, मैं भी नहीं, तो इस चीज को आपको समझाना होगा। और बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं पेरेंट्स, क्योंकि वर्किंग होते हैं दोनों, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम अगर आप निकालें तो वो लोग भी एक टाइम के बाद डेवलपमेंट उन लोग का भी देखने को आपको मिलेगा। तो छोटा छोटा चीज पे अगर हम लोग काम करते हैं ना, तो देखिएगा बहुत ज्यादा आपको अच्छा चीज देखने को मिलेगा, रिजल्ट विल गुड, ठीक है सर। And after that you join the session. Thank you. First of all, I want to hats off those teachers who taught in primary section, because really it is a very tough task to inculcate the students. But right now we know that the time is changing day by day, and so many things we have to change ourselves, and also we have to change our methods of teaching as well. I think you all are agree with this thing. As we know that also it is a curriculum of CBSE. It has given a lot of responsibilities to us. We can take the example of when the student ready to take the bus and then he come back to the school. Actually, so many things are there. It is a school bag. Actually, what he keeps in his bag right now, no one cares. In junior section, it could be there, but in senior classes, no one cares. Little bit, there is a difference. Those guardians who are very sensitive and careful, they can take it separately. But maximum, they don't think so. They don't check what is the thing inside the bag. They are carrying regular homework. The homework is already given, but that is most of the cases we have seen here. We are also facing the volley of questions during the parents-teachers meet. Right now, that is the point that very earlier time, the teacher's responsibility was no doubt, but right now the situation is little bit changed. In time of teaching, it was a blessing, but right now it was not a blessing. It is treated as a punishment. Agree or not? Second thing, the methods, what is going to deliver in the classroom, that is another thing. But if you give pressure to the child, then it is not favorable for the students as well as the teachers. Agree or not?
Agree or not? Yes. These are the changes we can feel in teaching. Those who take this thing as a profession by chance or by really, they feel it how far the statement is correct. Now this time, it is all about the changes, all about the scenario, what we are facing day by day. When the ma'am was started taking the session, I was observing all these things that your inputs, what I have received. It was really a good experience to share. Right now, here, some thing is there we want to share with you. First of all, you know very well that teaching. Actually, what is teaching? You can say the process of engaging the students in various activities that will enable them to acquire the knowledge, skills as well as worthwhile values and attitudes. Attitude and manner and behavior. These are that for which the school really inculcate these all things. That's why that all the guardians believe in the school and the education system. What could be the behavior, what could be the base, or what could be the changing in behavior. As we know that education itself a word. It indicates the Latin word educatum or educator. The meaning is very broad. Asto ma sadgamaya, tamso ma jyotirgamaya, mrityur ma amritam gamaya. These are the themes of this education. So a lot of things are there. Right now this is the 21st century skill, and according to CBSE, so many changes are there. A lot of methods, methodologies are there. So as per the curriculum, as per the changes of situation, we have to change ourselves in this situation. Now, why teaching is important? We can see first, any subject. It could not be a matter that particular or specialized subject. It could be on any subject, including game, including drama, including music, or any other. We can include this thing. First, this is called approach. Teaching approach. Why it is so important? Why we gathered here, spending Sunday? You have a lot of works, but still you are here. Yes or no? Because of specialization, to learn the things. That's why. So approach, it is a set of principles, beliefs or ideas about the nature of learning which is translated into the classroom. In my opinion, this is not a training session. It is just like a classroom where you and me are engaging here to learn something new. If anyone commit mistakes, then it could be acceptable. So it is all about the sets and the belief system, which is very important to change ourselves in this technique. So the beliefs, it could be, very well, beliefs as so many experiences. I have seen some questions, like the questions are here. You have to involve in this parameter. Listen the question carefully. What student expects from a teacher? I want your views. What students expect from a teacher? I know very well the answer could be different, but please, from here I can start. Yes, sir? Good morning, sir.
understanding of the concepts, understanding of topic delivered in the class, silence in the class, do quiz, music, entertainment, interact with the student, interactive way of learning, that is smart class, computer lab, etc. Thank you, sir. Any other man? Good morning, sir. Knowledge and expertise, effective communication, fairness and consistency, positive attitude, most important, and guidance and support to every children, to each and every children, equally. Thank you, ma'am. Yes, sir. Thank you, sir. First of all, students want safe praise from a teacher. They expect support in studies from a teacher. Students always want proper and contextual content of the class from a teacher. Students want effective communication in teaching from a teacher. They want new and interesting examples and also use of new technology of the lesson from a teacher. Thank you. Welcome. Any other teacher? Yes. Good. My name is Satyan Kumar Singh. I am also a teacher of DIKSHA International School. The student always accept clear communication with politeness. And the second thing which the student expects, friendly behavior with charming smile. And third thing which the student expects, the depth knowledge with the smart method. And fourth thing which the student accepts, patience and the understanding must be high. And fifth thing, confidence, positive attitude, discipline, skillful, sensitive, intelligent and innovative ideas with consistency and creativity. Teachers are born by nature but may be skilled or sharp by their practice because education takes exercise to sustain the knowledge. Thank you. Okay, thank you. 82 points, which you like? 82 points. 82. Good morning to all. Good morning. Good morning to all. My name is Mukesh Samro. Hello. My name is Mukesh Samro from Ramakrishna Vidya Mandir. Hello. What students expect from a teacher? First of all, real life examples. Real life examples. Students want Teachers to use real life examples to make the content easy. And equality. Next point, equality. Equality means students accept teachers to treat all the students equality. That's all. thank you. So these teachers. Well then, actually here, Acceptance, students who wants to acceptance to accept them whether they are and pray. Students who want just to praise them which can thank you, sir. It is all about the teaching approach, and I
It's a good way to know what do you think about it. The first thing is that they want respect. They want to connect with the teacher, with the environment of teaching. Not to distract from the topic, and careness. Extra care is also there. It could be a part of this point. So it could be there. And finally, the crux of this thing, learning by doing. Are you agree? This is all about this thing, learning by doing. It's a method. However, we can teach a lot of students different methods, methodologies, what could be there, but they could learn if they have intensity. It is just like an example of a bomb and the matchbox is there. Both are active, but without matchbox, a bomb would not spark. So, we can say that our role is only to inspire the student to learn. It is all about the enforcement of learning. These are the basic things. It is no matter in which class you are going to teach. Either it could be junior or senior and senior secondary classes. We accept it that all these stages, the learning process is changing because it is all about the abilities. What do they think? In junior classes, we have to focus on the psychomotor activity. Agree or not? Because on that time, we have to prefer so many activities. A lot of, in fact, the whole environment of the school is going to be covered in such a way that it could be a part of learning scenario. Suppose he stepped down towards the stairs. We can see that tables are written there. When you enter the classroom, different walls are full of pictures, activities. So it creates a scenario. Because one more thing I want to add here. Suppose A for apple. We teach just in this way, a general method, A for apple. But if in the place of apple, we could present it or demonstrate it, tell me what would be the best method in this way? I think the demonstration. Yes, sir. Are you agree? Thank you, sir. Still, in olden eras, I am talking about the antediluvian time when the teacher used to be guru and student used to be disciple. And that we have to abide by in our modern era too. Because there is the lack of empathy, lack of respect is often prevailing among the relationship of the students and teacher. The students won't be able to understand unless they respect the teachers that much. They listen the song but lose the music. They listen the argument but lose the conclusion. So they have the pool of data but lack of information. And teachers also. We are become just like an educator, but not the real guru. Not living in their hearts. Exasperating farrago of distortion, misrepresentation, and outright lies being broadcast by unprincipled teachers masquerading as an educationist. And they have the number of way of increasing nowadays, only to become the service-oriented, not enlighten them, not giving them the information that way so that should be equally assimilated by them so that they may use in future time, because the time is changing. We don't have the problem of information. It is flowing in the air. But happening is that what is the execution of the knowledge? This thing signifies our future being of our India. Right now. Thank you for your ideas. We know very well it is all about the
CBSE curriculum. So many things are there. We know what are the limitations. Suppose the power and the position is there. Chanakya was said that once a time that the entire thing could be changed if a person wants. But on that time, he already made a power on that regard that the Chandragupta came into the effect and do whatever we know. So, in this time, if we want to revolution to the system or to the management, it could not be fruitful. So the basic thing is that why should not we change ourselves? And why should not we go through according to the system, what system wants? So it is all about, it is just like a controversy thing. So many things you know very well, better than me. So let us do some other thing. Now some approaches, which is here. The methods, during that time it was teacher-centered, subject matter, disciplinary approach, individualistic, indirect or guided, learner-centric, and interactive method, concept-based, integrated, collaborative, and direct approach. So many things are there to change. First, constructivism. We know very well a teacher has the power to create and to destroy the things. Suppose demonstration. No doubt it is a very good method and we can present it in better way. हम सभी किसी न किसी मेथड को लेकर क्लास में जाते हैं और सबसे बड़ी चीजें ये हैं कि आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ या जो क्लासरूम में मैं डिलीवर करने वाला हूँ वो कितना ज्यादा कनेक्टेड है और इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम स्टूडेंट से कितना ज्यादा फैमिलियर हो सकते हैं ताकि हम उन्हें इस टॉपिक के थ्रू कनेक्ट कर पाए। जैसा कि मैंने कहा आपको, the constructivism, it could be a basic thing and it could be created inside the classroom. Now, there is a situation. The situation is that you have to create a lesson, what you ready to teach in the classroom, and you have to correlate with the other segment. Like, you teach mathematics, but you have to connect with some game or the music. Can it be possible? Can it be possible? Yes or no? Good. Another thing is that, as per the new education policy, some other things are also included here. Like, there is a question about blended learning. Just give the brief sketch about it. Please raise your hand who wants to explain the term blended learning. Yes. Okay, sir. DIKSHA International School. Sir, you are asking about blending learning. So blending learning means it is a type of mixture machine. As you are mixing the different, suppose you want to make a particular food and then ingredients are there and we are mixing in the grinding machine, same as in our classroom management. We have to mix up the different art of the teaching. That is called blending learning of the teaching methods. Thank you, sir. Very good. Give a big hand.
The another question, how many subjects or what are the subjects could be taught by this method? Anyone? Yes? Yes sir, very good. Again give the big hands. Excellent. All subjects we can include in blended learning. It is just like a grinder. Whatever you put, the outcome will be very beautiful. As per the changing curriculum of the CBSE, the works of the teacher is going to be reduced. We have not to taught forcefully in the classroom, but a little bit change we have to include here. हमें बहुत नहीं पढ़ाना है क्लास में बस उस टॉपिक को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि वो उसे एक उसके दिमाग पे छाप छोड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप जब कोई मूवी देखते हैं, उस मूवी का स्टार्टिंग देखकर आप पता लगा लेते हैं कि वो मूवी कैसी हो सकती है। उसे 3 घंटा स्पेंड करने की जरूरत है भी या नहीं। पॉपकॉर्न और कोको कोला के साथ उस मूवी को एंजॉय किया भी जा सकता है या नहीं। एज यू नो वेरी वेल, विद द मूवी जस्ट इट ऑल्सो केम टू योर हैंड, इन योर मोबाइल फोन, so many things are there. The scenario of movie is going to be changed into web series. So many parts are there. So that particular change you have to do in the classroom, that your viewers can enjoy your class. One more thing I want to add here. The thing is that suppose the sir is English teacher. नो डाउट उनके ट्यूशंस अच्छे से चल रहे होंगे। यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं, इंग्लिश के, लिटरेचर के और साइंस के, मैथ्स के। लेकिन एक बेसिक प्रॉब्लम, जब आपका बच्चा किसी दूसरे टीचर के पास चला जाता हो पढ़ने, देन इट्स अ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट वेयर आई एम लैकिंग। जब आपकी टीचिंग में वो वाली ब्लेंड ना हो, as per during the time of shaving we changes blades, so it could be effective in our teaching also. जब वो बात नहीं हो, then there is a time to introspect. So here the process, the experience, so many things are there. It is already counted, but the real teaching is that in this time where the students, the mind of the students are different, the mind of the guardians are also different. They expect so many things. As sir also said that during that time the teacher was treated as guru, but now we are just teachers. Educators, little bit some experience is there, and if some more additional study is going to be added, then it could be possible. Otherwise, it is just like a profession. A guru and teacher both are different. Our teaching just like a profession. We are not gurus. It's a very spiritual word, and having so many, entire world is there. The word gu and ru have consisting different meaning. As I told you earlier, Astoma Sadgamaya. But right now it is not going to be fulfilled. That is how it could be professional. You can take the example of IITs and IIMs. There are also institutes. JNU, BHU, these are also institutes. But what happens there? So many things are there. Entire whole thing, if we count that particular topic, then I'm very sure about that I'm going to distract from the topic. So it is just like a controversy. Now next, distribute the chart papers.
it's a time to do an activity with the help of concept map. The condition is that I know that you all are expert from your subject, and the concept is that you have to pick a topic which you like most, and with the help of concept map. Yes. Yes. You have to pick a topic, and with the help of concept map, so many things are there. You have to follow a particular condition. Actually, that we have to follow. It is implement, planning, and evaluate. It means that in a particular classroom, you have 40 minutes. Topic you have to write at the heading. Time is according to suppose 30 minutes. 30 minutes. But right now I am giving you 20 minutes. And these 20 minutes you have to draw a concept map. The topic is from your side, and you have in which way you have to going to teach that particular topic. Is it clear, sir? Good. So do that. You have to select the topic, and at the top of the sheet, you have to write the name of the topic. Left side, you have to mention the time, that is preferred 20 minutes. And the right side, you have to write the classroom for that particular chart paper or concept map reflects for which class. And in between, we have to draw the concept map in which method you want to go to teach in the classroom. Is that clear? So do that. Select a common topic because the chart papers are distributed according to the table wise. So it might be possible that so many subjects are there, subject teachers are there. So make a common topic which is going to be present according to that chapter. Yes, ma'am. Yes. Yes. With the help of concept map. Concept map means, suppose in a particular topic, so many parts are there. Okay, like suppose a coin is there. We have to draw first what are the things. Chemical reaction could be a point. Okay, the figure by which figure you going to demonstrate what are the main things. Okay, and the feedback. For feedback, what could be the things or the questions could be included. One or two questions must be there, and how you can present. Yeah, no, it is a part. It's a part of lesson class. Lesson class is different. Yes.
You have to also include the methods. On which methods you can going to teach that particular topic. this chart paper, whatever it is given to you, not use full space. Please keep some space for another activity.
So on that particular chart paper, either right side or left side, please remain some space for another activity. Little bit space must be there. Please maintain the time. The standard time is 20 minutes to do this activity.
is completed. Yes? So too fast. 5 minutes more because you have to present here also. That's why it is important. It's an important activity. Tables are important. I have seen that 3 to 4 tables, the chart paper is not there. That is not good. Because we all are teachers, our main thing is that to connect with the teaching. Now some attention, because teachers, please pay attention what I am going to say. Like a process, teaching learning process. In this method, I just told you that please keep some space either right side or left side. So it's the time to frame a question. I know you all are aware of the taxonomy, Bloom's taxonomy. Yes? Yes? Good. So whatever the topic you have chosen, questions for different aspects. We know these levels are there. According to that level, you have to frame questions. If it is not visible, then you can write the names. The first, please note it down. Those who are teaching primary class, means LKG to class 1 and 2. They have to frame remembering and understanding level. Dear teachers, listen carefully. Those who are taking classes in primary level up to class 2, they have to frame a question according to remembering level and understanding level. Especially those who are taking class 3 to 5, you must include applying nature of question, applying level. It must be there, remembering, understanding, but one more level will be there, applying nature. Those who are taking class 8 to class 12, then you have to include 2 more, evaluating nature and creative level. So 3 levels are there. L2, LKG 2 or nursery 2, class 2, 3 to 6 or 3 to 5 you can say, 3 to 5. It could be 1 more, applying nature, and 6 to class 12. Another 2 levels must be there, the evaluating nature and the creating nature. So frame a question according to these levels.
for each class you have to be here, and the time is that is 20 minutes, and then according to taxonomy you have to, according to that level you have to frame a question, at least 2 for each level. Something is lacking, sir. First, you have to write the name of the topic, class, time, and then question. Frame a question, sir. Okay. Your class is, sir, what is group? Class 10. Then you have to include creating and understanding level or applying. Is that clear? Overall. Class time. Something is lacking, sir. If you don't mind. Class, topic, and then understanding. Questions. It is the way of presentation. But you have to write a question. For each class. And time for I have written in for which class? For which class? Class 10. Okay. Then understanding and creating. For 2 questions. Yes. Good job, sir. Learning process. I'm not asking that. Suppose you are taking class 8, 9, whatever. That topic you have. Suppose is math, science, English, Sanskrit. Or maybe a common concept, right? That topic. I'm a teacher of computer science, basically. Yes, the common concept is select a particular topic. In any subject counts. There is no difference between basic and that CCC math, science, chemistry, and बनाइए तो भाई सबका मोबाइल है वो
क्रिया विकारी होगा क्रिया अभिकारी और विकारी भी होता है बुझिए नब्बे इसी का मतलब हो गया यही हो गया तो ये विकारी हो गया क्रिया विशेषण हो गया सर्वनाम संज्ञा की विशेषता को बताता है Question, ma'am. Write the level first, remembering level and understanding level. Then Remembering level is identified now. right there. Good. Very something. So, ma'am, first you have to write custodian copy. And then time, and then class, and then methods of questions for applying nature, understanding, and creating. 3 levels have to make at least 2 questions. Understood? Method. Let's start. Good. Listen. Yeah, lacking man here. Remembering nature and understanding nature. That we have to mention here. Yeah, type of it. Good. Ultimate. Oh, good. Excellent. These 2 things is that's a topic, class, subject, good. What is a section? For class 3, remembering and understanding will be there. So, sir, present for each question reflects the remembering level. That level you have to write, and that understanding level you have to write. Okay? Thank you. My dear teachers, don't mind if there is any mistake you did in that project. Because in coming future, I am very sure about it that change your skill. Probably there's a lack, some missing in the project. Your activity is that to remove that mistakes what you did here. So don't mind, because mistake is a step of learning. And also you have to, I have already mentioned that the Bloom's taxonomy is a backbone. If you are a teacher, then you must know the concept about Bloom's taxonomy. So according, you have to keep it in mind always that if I am framing a particular question for a particular class, then we should always keep it in mind what could be the level and what could that level start with that particular word. Then according to that you can frame a model questions, and that is the another activity of which is guided by the CBSE also. If some teacher in the group of management where the question is going to be framed, that is one of the assignments. So please do it seriously.
It includes it is case studies or then different questions are there. Yeah, good. Then you like applying nature. Like right here, apply nature. This is creating nature, right? Creating and applying. Excellent, sir. Good. Keep it here. Only just you change a little bit what I have suggested. Then, sir. Thank you. Is completed. Very good, ma'am. Excellent. So now just keep it there. And after some time you have to present here. Okay. Good. So, dear teachers, it's your time to come here and present the topic. If a particular table has completed the work, so be ready for that. Start. Our team was working on the concept, and the concept is benefits of trees. So now here we have that presentation, and in this presentation we have tried to demonstrate the roles and the benefits of the trees. Basically, trees provide oxygen, it provides shade, and trees also provides paper. So through this chart, I am just trying to demonstrate about the benefits. Again, with the help of oxygen, all the most living organisms living in this world. Again, we have the use of paper for the notepad and also for the books. Again, we have also drawn the trees and also the paper industries on this chart. Again, we have also raised those questions on this concept, the benefits of the trees or the trees. Then we raised the questions on this topic. For the primary level, we will ask what is tree with the help of the picture. What are those parts of the trees with the help of the picture? Because at this level we are using the pictorial use of picture for the teaching tools. And when we are going level at that secondary level, we are asking about some questions on this topic like use of trees. Again, we will just ask what is the classification of the trees when we are just at that level. Again, we are at the secondary, senior secondary, we will ask about the photosynthesis process. Again, we are asking about why the leaves are green, what is the role of the trees in the ecosystem. Thank you. Thank you all. Excellent, sir. There one more thing. These two things. The first, the concept of keep that activity on the table. Okay. जो बैठ जाए सब लोग आएंगे कि टेबल पर on a nervous system. As we know, in our body, control and coordination is taken by nervous system. And nervous systems help us in our daily life. Nervous systems are divided in two forms: central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system, which brain and spinal cord. Brains help
us to think, learn and do our activity with memorizing each and every moment of our daily life functions. Central nervous system brain is divided in 3 parts: forebrain, midbrain and hindbrain. Every part have their specific function and do their job according to the willingness and non-willingness of our body nervous system. Okay, sir. Now ready to represent the topic according to Bloom's taxonomy. Level of questions. We can ask the questions regarding that. What is CNS? If everyone knows central nervous system, then we can ask them about the questions. What is CNS? What is the overall function of brain? As we told that brain helps in various functions. So we can ask this question to the students. Next, in the creative question, what are some common neurotransmitters? Here, neurotransmitter helps neurons, the basic unit of nerves. How can one nerve make signal to transfer from one nerve to the another nerve? Okay, and it makes neurotransmitter. Examples, acetylcholine is an example of good neurotransmitter. Okay, sir. Thank you. It's a good activity consisting 2 things: the concept math method, and second, the level of the Bloom's taxonomy. Excellent, good job. Now next part. Secondary and tertiary sector. In case of primary sector, agriculture products, raw materials, etc. And these primary products can be converted into secondary products by the skill development of our workers. And these secondary products can be converted into tertiary, and these tertiary products are the service product, and the product that comes in the sector that is known as the tertiary sector. Now we will see the analyzing these products. First of all, I will discuss on the case study of this topic. Suppose that Ram works in an agriculture field and his wife helps in that activity. Both help in that activity, the total production is 5 tons, and his wife goes to the mill and the mill worker convert into 5 tons. That means the primary product is converted into the secondary, and this secondary product is converted into the tertiary. Now we will explain that by the skill development, now this 4.5 ton of wheat flour is converted into the 1,000 biscuits of cost ₹50 per biscuit. Focus on taxonomy, sir. Let's focus on taxonomy. How many levels? 2 levels, analyzing and the case study. Excellent, good. If you don't mind, that project is project of the day. Give a big hand. Good job. Thank you, sir. Now next, please come with your presentation. आइए सर, आइए ना, कोई जरूरत नहीं, आइए। अगर मैंने अभी बैठने को कहा, अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी इसके लिए, लेकिन इतना अच्छा प्रेजेंटेशन आप लोग बनाए हो और यही करके अगर आओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना, वो ज्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो टीचर्स प्लीज कम। We can elaborate or explain the student season. We have made 4 flashcards, and these flashcards shows the summer season, winter season, rainy season, and spring season. And the learning outcome is that what the student know, they are exactly know the meaning of season and the kind of season also. And there are the question that is remembering method. The one is, in which season we wear cotton clothes, and the answer is you know all this. And the next question is understanding method. Through this we make another question, write 2 differences between summer season and winter season. There are 2 differences. Okay, ma'am. Good. Little bit we have to
dear teachers, you have to be very clear about it. Flashcard. In which category you want to represent? Methods or methodology? Raise your hand. Raise your hand. Please raise your hand. Flashcard. In which category you want to keep? Either methods or methodology? Anyone? 5, 4, 3, okay. It's method. It's a methodology. It's a methodology, yes. So many methodologies are there where flashcard is one of the methodologies. So get a big hand for this group. Excellent. Well done. Thank you. Next table, be ready. As you see in the chart, I have explained photosynthesis, and this chart explaining everything about the photosynthesis. And the main motive which I want to tell you, and I want to express my personal thinking about the teaching. Teaching is an art. Teaching is an art which plays an important role to attract the students. I always use 3D formula whenever I go to teach in the class, and always use 3D formula and explain in detail before the student what is 3D. 3D, this means for default determination. If students are not determined, no any teaching is important for them. Second, D is for dedication. If students have no dedication, they will not understand and they will not perform very well. And third D is the devotion. And I always use 3D formula and expect to the student they use this 3D formula and reach the goal in his life. Sir, now come to the point, Bloom's taxonomy. How many levels you have created the question? Only name of the levels. From this chart, there are so many questions may be created. First, what is the flower, and what is the function of plants, what is the function of root, and from where they get sunlight, what is the requirement for the photosynthesis, from the where from plants get carbon dioxide, from where plants get oxygen, and so many questions may be created from this one. Okay, sir, thank you. Okay, so study with us in our society. So our neighbors having a society with a school, bank, hospital, post office, railway station, and many of more. Actually, being a teacher, we must focus in our society because we know very well teachers are the real builder of the nation. But how we can make the nation first? So, due to our level as society. If society is good, definitely the mentality of the students of that society is good. So it is totally upon our society. If society is better, the students, the family members of that society is very good. So related to this topic, our neighbors having the two questions, how neighbor help us? That means what is the importance of our neighbors? How can help us or help us? In many manners they can help us. And second question, what is neighborhood? How could be a neighborhood be good for us and the society? Thank you, that's all. Sir, sorry for interruption. What is your second question? Please make it clear. Question is that, what is neighborhood? For which level? For the level to the school, level 1. Okay. And second question is, sir? And second question is, how neighbors help us? How the neighbors help us? Good. Thank you, sir. Put hands together for this group. A closed flat figure bounded by 3 line segment. Later on,
we shall classify it on the basis of side as well as on the basis of angle. On the basis of side, a triangle is classified in three parts. The first one is equilateral triangle, a triangle having all three sides equal. And the second one is isosceles triangle, a triangle having two sides equal. Next, scalene triangle, a triangle in which no sides are equal. And on the basis of angle, we shall classify triangle again in three parts. The first one is acute angle triangle, a triangle in which all three angles are acute angles. That is, the measurement of each angle will be less than 90 and greater than 0. And the second one is right angle triangle. In this very triangle, one angle will contain the measurement of 90 degrees, whereas the remaining two will be acute angles. And the third one is on the basis of this very topic, angle, obtuse angle triangle. In this very triangle, the measurement of one angle will be obtuse angle, that is more than 90 but less than 180, and the remaining two angles will be less than 90 degrees. Come to the question, sir. Taxonomy. Questions. There are so many various questions. Aspects may be arises. That's what is triangle and what are its basic properties, what are the classification, how many types of triangle, the various properties, what are the different shapes and size of these triangles, like so. Sir, I'm interrupting if you don't mind. May I? Sir, may I say something? Yes, sir. In this presentation, no doubt it is one of the best presentation which reflects concept method. But the second thing is that level of questions you have to mention there. Okay? Okay. So this I could consider 6 onwards. The topic is there. Yes, 7 class. Yeah, class 6. Here you have to put 2 types of question: creating and applying. Okay? So for future you have to keep it in mind. Okay? Don't mind. Thank you. The concept of blended learning. So once again, with the big hands together. Good. Next ma'am. So our today's topic is the Delhi Sultanate from history, and we are here to describe the rulers of the Delhi Sultanate. And they are dynasty of the Delhi Sultanate, and they are slave dynasty, Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty, and Lodi dynasty. Through this chart, we are here to explain that political and social economic life, administration of Chehargani, Iqtar system, and economic life, and Indo-Islamic style and arc and dome method in art and architecture. And here are some questions from the remembering and understanding level. So, my first question is, how long was the period of Delhi Sultanate? My second question is, describe about the Chehargani system in Delhi Sultanate. My third question is, describe 2 or 3 administrative reforms by Alauddin Khilji. And my fourth and last question is, how many dynasties were there in Delhi Sultanate? Excellent, ma'am. With the big hands there. Yes, this fulfills all the categories according to these methods and methodologies. Thank you, ma'am. Thank you. In our presentation, we show that types of plant, like 5 types of plant: trees, herbs, river, and climber. By figure, we show that the biggest and strongest plant is the tree, and the plant smaller than tree is a shrub like rose, hibiscus, and a very small plant like wheat is the herb, and creeper that's grows around the ground is the creeper like watermelon, and climber like grapes. And in our presentation, the understanding level question is, what kind of plant cannot stand straight on the ground, and what is the tree,
And in our presentation, the numeric level of the question is give examples of each type of plants. Okay, thank you. Excellent. Get the big hands for each participant. This is one of the best presentations in this category. Mind mapping method and What ma'am, please? What's the method? mind mapping method and definition and explanation method. So I give definition of a noun and with examples, and I wrote that types of nouns, and I describe one by one with example and underline with the types of noun, and I use the group taxonomy method with questions like identify noun in the classroom for understanding after lesson. And second question is make a group of students each kind of noun and identify in the outside of the classroom of all kind of nouns like activity. Very good, ma'am. It's a very good presentation in the field of literature. Get the big hands for literature part. Very good. Excellent. I did. Good afternoon, all of you. My topic is ecosystem. My topic is ecosystem. And now ecosystem, artificial natural environment. There are two topics. One is artificial and second one is natural environment. Now ecosystem, natural ecosystem has two parts, terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. In terrestrial ecosystem, grassland, forest and desert. Now come to the aquatic ecosystem is marine and fresh water. Now come to the artificial ecosystem, agriculture, field, aquarium and floating farming. Now natural ecosystem, what is artificial ecosystem? Natural ecosystem is a natural things which are consist of all the things like plants, animals, microorganisms. Now come to the artificial ecosystem, which is made by the human beings. Now come to the ecosystem concept map. There is four types of map I have made. First one is atmosphere. In atmosphere, three things is included: gas, wind and weather. Okay. Now come to the what is ecosystem. First question is what is ecosystem. Now second question is types of ecosystem. And now come to the next question is what are natural ecosystem. And third question is what is artificial ecosystem. Little bit, I want to make a friend. If you want to put the questions or frame a particular question, please keep a differentiation. Okay, if you have selected what, then please change it to the another one. Take another group, classify for the answer. Okay. Now comes in the classified form with the natural ecosystem. There is two types: terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. Very good. Now come to the artificial ecosystem classification is agriculture, field, aquarium, floating farming. Okay, thanks. Get a big hand for this group. Picture based method. We will draw a picture and we will teach the student this is the one part and this is the all of the four parts. And the fraction will be 1 out of the 4, 1 by 4. Then they will understand the fraction, what is fraction. And we will discuss the type of the fraction, it means proper fraction and improper fraction. Taxonomy, sir. Taxonomy. Taxonomy means if for remembering method में हम लोग करेंगे how many types of fraction are and what is a fraction, and for understanding method we will discuss which of the following is a proper fraction, which of the following are improper fraction. Good, sir. Thank you for presenting the topic. Beautiful. The session. Yes? Okay. If I am not wrong, so it could be continued for a little bit. So many things are there for the development of our skill.
one more thing I want to add here. According to this topic, as you know, the objectives, there are so many methods and methodologies included. So, first, how was the lunch? Yes. Little bit in every lunch. It is a part of pros and cons. It is based on opinion of the person who holds the plate. It might be possible that some positive sides are there, some negative sides are there. It might be possible in some case of the opinion that little bit it was oily, it was spicy, and many more. But overall, if you think about that plate, what was there, you have to judge yourself whether it is enough, good, or sufficient or not. It is as per the condition. If you are taking a food on a plate, it is a part of a concept. What are the things which I prefer most? Which are those things I little bit avoid? So in this type of situation, it happens in the classroom. Sometimes it might be possible that the class is according to the food setup of the teacher, according to the student. But in some cases, in some of the days, it might not be possible that your choice will be there. You can fulfill your demand according to the student. In that case, we have to change our methods, our skills, our techniques. As in this project, as I have seen that the effort what you have put on it, it was very brilliant. So put your hands together for yourself first, because these methods and techniques, whatever it could be, but without your effort, it could not be possible. So the next session will be taken by ma'am. There are 3 domains. किसी को याद है क्या? 3 domains. हम लोग ये पढ़ने आ रहे हैं. क्या याद है आप लोगों को? 3 major domains are there. Okay. ठीक है. इस चीज को लोग याद कर. ठीक है. ये पिक्चर है ना फोटो? किसका फोटो है? कैप का. कैप का स्पेलिंग क्या होता है? And people. याद हो गया? याद हो गया? सही. आप बता सकते हैं 3 मेजर डोमेन्स का नाम, है ना? क्या क्या नाम था? अच्छा एक मिनट. ये आप ये चीज भी क्लास में यूज कर सकते हैं, है ना? कम समय में ज्यादा राइट. ये चीज आप यूज करें. नेक्स्ट पैटर्न. अच्छा 33 आप यहाँ पे 3H देख होंगे. 3H है ना? तो गांधी जी ने कहा है 3H इसको, हिट और हैंड. ठीक है. कॉग्निटिव डोमेन जो होता है वो हमारे दिमाग से रिलेटेड होता है. ठीक है. अफेक्टिव डोमेन जो होता है वो हमारे दिल से रिलेटेड होता है. यस. और P यानी हैंड से, यानी साइकोमोटर, वो हमारे हैंड से होता है. बच्चे ये 3 चीज भी यूज करते हैं कुछ भी सीखने. ठीक है. कराएं. अब एक्सपीरियंशियल ये सुना होगा ना? कोई डेफिनेशन दे सकता है क्या इसका?
है क्या? नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना, है ना? पता नहीं क्या होगा। ठीक है, मैं इसका अच्छे से डिफाइन करती हूँ, ठीक है? अच्छे से मैं समझाने की कोशिश, फिर आपको एक प्रॉप दूंगी, उस प्रॉप को यूज करके आपको ये चीज डिफाइन करना है। क्लियर? आगे देखिए, हम लोग पहले के जमाने में थोड़ा क्या थे, पहले बर्थडे मनता था, है ना? केक का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ठीक? एज ए स्टोरी टाइप में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक बच्चा का बर्थडे था, उसमें बहुत सारे लोग आए थे, वो लोग उनका केक देखकर बहुत अच्छा लगा पहले के जमाने में। अब अच्छा लगा तो वो लोग भी सोच रहे थे कि हम भी जब अपने बच्चों का जन्मदिन करें, बर्थडे करें, तो थोड़ा सा इससे भी थोड़ा सा अच्छा करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, है ना? अब उन्होंने क्या किया, उस चीज को रिव्यू किया, क्योंकि बच्चे का जन्मदिन आने वाला, ठीक है? रिव्यू किया। अब रिव्यू होने के बाद क्या होता है, अब उनके मन में पिक्चर है, ठीक है? आप देख सकते हो पिक्चर है, कलर भी है। अब उनको लगा कि अगर मैं भी इस चीज को यूज कर देता है तो थोड़ा सा अलग होगा, है ना? फाइनली उन्होंने ऐसा बनवाया कि कितना खूबसूरत लगा। तो इसी को बोलते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। समझ में आया ये चीज? आपको एक प्रॉप दूंगी, कलूंगी, आपको उसको यूज करना है और इसको डिफाइन करना है, हो जाएगा? क्या मैं एक बार ट्राई करवा सकती हूँ? ओके सर, चलो। मार्कर ना, मार्कर है ना आपके पास? हाँ, उसको यूज कर सकते हैं। कुछ सोचिए पहले क्या होता था, फिर आपने क्या सोचा, फिर उसको कैसे फुलफिल करने को कोशिश की, और लफानी हो, है ना? तो यू आपके पास मार्कर भी है, अगर मार्कर का यूज करना चाहते तो यूज करें। It depends on you. No confusion here. I think, as I have observed, the first, according to size of balloon, there is a long thread. What is an application? It might be a part of confusion, but no problem at all. It is a part of an activity. उन चीजों को बताया नहीं जाता, समझना पड़ता है, ठीक है? कुछ प्रॉप मिला है तो समझना पड़ेगा। In every class, there is an special child.
Either it could be brilliant or it could be a slow learner. It depends on you how to be treated. You have only 5 minutes. 5 मिनट आप लोग को दिए, प्रिपेयर कर लीजिए. टेबल पर, प्लीज. Who wants to explain? Please stand up. Anyone? Because the balloon is already there. You have to ready for that. It's going to be fast. One by one. The balloon and plate is already there. You have to connect it with the topic. यहीं पे दे सकती हूँ एग्जाम्पल के रूप में. अगर पोएम कर सकते हैं या फिर कोई सॉन्ग कर सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए, प्रॉप को यूज करते हुए या छोटा सा डांस स्टेप भी कर सकते हैं. मैं यूज कर रही हूँ, बाकी का आगे भी और कुछ कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं. If any group is ready, please come. Please come fast. If anyone is ready to present. So you want a fun picture? Sir, correlate with the topic actually. देखिए इसमें जो है फेस दिखाया गया है, इसे आदमी का है, तो इसके द्वारा हमें ये सोच रहा था कि कुछ जो है हमको ऐसा कुछ मतलब और एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम कुछ और ज्यादा मिलेगा, लेकिन ये हाँ ये एक टाइप का सैड हो गया कि नहीं मुझे नहीं मिला. तो उसके लिए ये जो है आपका ये मतलब दिखाया जा रहा है बच्चों को, ताकि इसके द्वारा जो बच्चे का मानसिक विकास होगा तो वो समझेंगे कि क्या इसका जो है भाव करने का. थैंक यू सर. और कोई बच्चों वाली हो रही है, मतलब हाथ में दे दो और पता नहीं उसके बाद क्या कर, है ना? विजिट करूँ. वाह. पहले क्या समझी थी? बस बच्चों का व्यू ऐसा है, पढ़ाई में ऐसा है, कितने से करना है, लेकिन जब उसको एक्टिव किया गया, उसको समझाया गया मॉडल नीति से, तो बच्चे को मिला ये. Excellent. Give a big hand. वाह मैम. थैंक यू. एवरीबॉडी एल्स? और कोई? हाँ सर, प्लीज. Ma'am, sorry for interruption. Looks like there is a next group system. Students in the day, and today I am going to show you that this balloon can be used as a prop to demonstrate that air exerts pressure in science lab. Or for the young students, very little students, we can demonstrate that air exerts pressure or air occupies space. For example, we have filled this balloon with air, and now once we release this air, what will happen? It will not expand anymore. So this is one of the methods. We can use this block in the classroom. There are also several other methods. For example, we can expand it using air and call it a person. We can name it as a character. Suppose we can call it Soul and this one Mono. So these two balloons will become two different characters, and in this way learning will not be boring anymore to the students, but it will be fun. And this is the main purpose of a teacher, to make our classes fun for the students. Thank you. Excellent explanation. Give the back.
big hands. Anybody else? और कोई? अरे आइए भाई. Please. Come on. With the help of balloon, we will explain that air has mass. We will calculate the weight of without filling air, and we will calculate the balloon with the air. And then we will make the difference between this two. And with the help of this, we will show that the air has mass. Thank you, sir. Good explanation. Give the big hands. Anybody else? Any different aspect? हम लोग सबसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं भाई, आइए. Because in this classroom, different minds are there. So it could be a part of differentiation. मैं ये कहूँगी बच्चों को कि इस बार अगर आप बहुत अच्छा नंबर लाए तो मैं आपके बर्थडे में एक गिफ्ट दूँगी और एक सॉन्ग सुनाऊंगी. Good, ma'am. हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा था बबलू डबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू. थैंक यू. थैंक यू. में आ नहीं जाता तो मैंने हम तीनों के बलून को ऐसे टाई कर दिया और इसमें एक तरफ कैट और 3 एग्स तीनों दिखा दिया. ब्लू मीन्स है आपका ब्रेन कॉग्निटिव, रेड फॉर हार्ट इफेक्टिव एंड पी फॉर साइकोमोटर दैट इज वायलेंट. थैंक यू मैम. अच्छा मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है. 2 बच्चे थे, एक 9 साल का बच्चा था और एक 13 साल का बच्चा था, ठीक है. वो लोग घूमने के लिए निकले, गाँव में रहते थे, घूमने के लिए निकले. इतना दूर चले गए वो लोग जंगल में खो गए, मतलब बहुत दूर चले गए. उसमें बड़ा बच्चा था 13 साल का था, 13 ईयर्स का था. वो क्या हुआ कि वहां पे उसने देखा है गड्ढे में गिर गया, ठीक है. अब वो जो छोटा बच्चा था जो 9 साल का था, वो बेचारा जो है सब कुछ चिल्लाए, बचाओ बचाओ मेरे दोस्त को बचाओ, मेरे दोस्त को बचाओ. आसपास कोई नहीं दिखा. लास्ट में वो बच्चा क्या किया, इधर उधर भागा तो किस्मत से उसको एक रस्सी मिली, ठीक है. तो रस्सी को उसने क्या किया कि फेंका. जो बड़ा बच्चा था उसके पास फेंक दिया. फेंकने के बाद क्या, बहुत कोशिश करने के बाद बच्चा को बाहर निकाला. जब तक वो बाहर निकालता है शाम हो जाता है. वो लोग औंधे औंधे घर जाते हैं कि डांट पड़ेगी, चलो भागो भागो भागो. वो लोग घर पहुंच गए. घर पहुंचने के बाद तो एक ही चीज हो सकता है, लेट हो गया देगा, डांट पड़ा बच्चा को, बहुत बुरी तरीके से डांट पड़ गई. लेकिन बोला अरे इसमें मेरी गलती नहीं है. इसमें क्या हुआ था कि वो जो बड़ा वाला है ना वो गिर गया था, तो मैं मुझे निकालने में थोड़ा टाइम लग गया. अब उसका घर वाला हंसने लगा, हाँ इतना छोटा बच्चा बड़ा बच्चा को निकाल सकता है. तो नहीं सही बोल रहे हैं. कोशिश किया, धीरे धीरे गांव में तो बात फैल जाती है, उसी तरह बात फैल गया. फैलने के बाद क्या हो गया कि वो बेचारा बच्चा जो है अपसेट हो गया, नहीं ऐसा मैंने किया है. तो कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था. 9 साल का बच्चा वो 13 ईयर्स का बच्चा को निकाल सकता है, संभव है ये चीज. अब ये होते वहां के जो मुखिया थे उनके पास एक बात पहुंची, तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं संभव. तो सब आदमी ऐसे उनको देख था कैसे संभव है, लेकिन उनका उम्र बहुत ज्यादा था मुखिया, बाकी जो मुखिया थे. अब सब आगे बैठ गया, बोला कैसे संभव है काका कि 9 साल का बच्चा 13 साल का बच्चा को निकाल सकता है, क्या संभव है. यहाँ क्यों नहीं संभव है, मतलब कैसे. बोला उस बच्चे को जो 9 साल का बच्चा था ना, उसको ये नहीं पता था कि वो 13 साल के बच्चे को नहीं निकाल पाएगा. बस उसके दिमाग में ये था कि हम निकाल लें, यानी उसके मन में सिर्फ पॉजिटिविटी थी, नेगेटिविटी नहीं थी. अगर हम बच्चों को मे भी अगर पॉजिटिविटी अगर हम डालेंगे तो श्योर है कि वो बहुत आगे जाएंगे, है ना. तो ये कहानी का ये मतलब है. इसीलिए मैंने प्रॉप दिया और मैं ये एक्सपेक्ट करती
करती हूँ कि आप लोग सब यहाँ पे आकर के आप लोग कर सकते हैं, प्लीज। ड्रॉ किया है। फिर हमारे बुक्स और कॉपीज होते हैं वो हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे एजुकेशन के टाइम में। फिर जो है मैंने जो हमें डिग्रियाँ मिलती है उसकी ग्रेजुएशन कैप और फिर डिग्री में जो हमें मिलता है वो है, और फिर उसके बाद वो लोग वर्क करते हैं अपने आफ्टर स्टडीज। इसका मैंने किया और फिर मैंने टाइम से आपको शुरू किया कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है हमारे स्टडी के लिए और हमारे स्टडी के बाद वर्क के लिए। Excellent presentation. Good. Thank you, ma'am. क्लैपिंग तो कर ही सकते हैं, Give a big hand. लेकिन आना नहीं चाह रहे, कौन सा बात नहीं है। प्लीज मैम आप लोग आइए, सर आप लोग आइए, सर। Students, the balloon like a prop. We can discuss topic generally. Generally, what happens is students often confused about the matter is the matter or not. Because the definition of matter is that anything which is occupied space and have a mass is called matter. But children generally get confused about the air. Is it a matter or not? Then we can explain it with a balloon that if we fill air in the balloon, it gets enlarged. It occupies space. That the air also is a matter. Very good, sir. थैंक यू सर। कोई स्टोरी के ऊपर यूज कर सकता है प्रॉप को, प्लीज कोई तो आए। Any frustration in our life, then we can remove it by bursting this balloon. Now, at the present time, I am going to sing a song according to my friends' advice. आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे गीतवा, मेरे गीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, गीत चांद चकोरी की प्रेम कहानी, प्रेम कहानी। प्रेम जगत में है सबसे पुरानी, सबसे पुरानी। एक पुरानी एक कहानी मेरी भी यह गीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे गीतवा, मेरे गीत रे। धन्यवाद। और कोई प्रॉप लेके बहुत अच्छे से 2-3 प्रॉप लेके घूम रहे हैं। निरंतर से तो बोल दिया
एनर्जेटिक सॉन्ग गाने को। चलिए मैं एक एनर्जेटिक सॉन्ग सुनाता हूं। ये सॉन्ग मैं यहाँ पर मेरे सारे कलीग्स और आए हुए मेरे प्यारे प्यारे आप लोग भी हमारे कलीग्स ही हैं। ये सॉन्ग आज का ये पूरा जो माहौल है ये हमारे लिए एक याद बन जाए, एक छोटा सा प्यारा सा यादगार लम्हा बन जाए, उसके अकॉर्डिंगली मैं एक सॉन्ग आपको डेडिकेट करता हूँ। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जानना, माने तू या मानना। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर हम लोग एक एनर्जी बनने के लिए थैंक यू। अच्छा लगा ना खाना खाने के बाद इतना अच्छा माहौल हो जाए, है ना। सर आ रहे हैं। Two violins together. This shows pair of something, pair of respect, pair of friendship. I am S.K. Singh, Satyendra Kumar Singh, a teacher of DIKSHA International School. I also write some poems. Today I want to sing a poem written by me, and the title of this poem is प्रेम पथिक तेरी राहों। अक्सर प्यार में लोग बिछड़ जाते हैं और ना जाने क्या क्या सितम उठा लेते, लेकिन मेरी इस कविता से शायद आगे वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इस कविता की पंक्तियों को सुने और उसको एहसास करें। हो कहाँ छिपी आवाज तो दो, हो कहाँ छिपी आवाज तो दो, अपनी इन मस्त फिजाओं में है प्रेम पथिक तुझे ढूंढ रहा इन प्यार की सूखी राहों। हो कहाँ छिपी आवाज तो दो, अपनी इन मस्त फिजाओं में है प्रेम पथिक तुझे ढूंढ रहा इन प्यार की सूनी राहों में। हर खनक तुम्हारे पायल, हर खनक तुम्हारे पायल की मेरे कानों में खनकती है। नैनों के दर्पण में जानू तेरी तस्वीर उभरती है। मैं मारा मारा फिरता हूँ, मैं मारा मारा फिरता हूँ, कहीं तेरा दर्शन हो जाए, प्रत्यक्ष रूप में मिल जाओ, तुमसे आलिंगन हो जाए। पर घड़ी मेरे इस चाहत की, पर घड़ी मेरे इस चाहत की अब तक न मुझे मिल पाया है। इस चाहत की बेताबी ने पागलता मुझे बनाया है। थकहार कभी जब किसी जगह, थकहार कभी जब किसी जगह रुक जाता हूँ सुस्ताने को, लेकर उन दिनों की यादें आती है पवन जलाने को। कहने लगती है मीठी पवन, कहने लगती है मीठी पवन, रे प्रेम पथिक क्यों रोता है। प्यार की निराहों में तो मिलना और बिछड़ना होता है। सुन पवन की ये मीठी बातें, सुन पवन की ये मीठी बातें, आंसू भी चुप रह लेता हूँ। तस्वीर निगाहों में लेकर ढूंढने तुझे चल देता हूँ, तस्वीर निगाहों में लेकर ढूंढने तुझे चल देता हूँ। यहाँ तो मिले बहुत सारे है ना आर्टिस्ट मिले, यानी हम लोग को टाइम नहीं मिलता है खुद को, है ना। तो कभी कभी मिलता है तो उसको एक्सप्रेस करना चाहिए, इसलिए मैं बोलती हूँ। चलिए अब फिर से
मैं चाहूंगा कि आप सब भी मेरे साथ एंजॉय करो को सॉन्ग भी मेरे साथ गाओ, अच्छा लगेगा, मजा आएगा, है ना। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है। सभी एक साथ नहीं ना? प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। रहे कोई सौ पर्दों में बड़े शर्म से, नजर अजीब आंख चुराए कोई सनम से। रहे कोई सौ पर्दों में बड़े शर्म से, नजर अजीब आंख चुराए कोई सनम से। वो छलक जाता है जो पैमाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, बेगाना होता है, बेगाना होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू लॉट। It's a very beautiful experience, and it was a very beautiful song. Thank you, sir. And more or less, it is my favorite song. Thank you. So it is all about experience. What you have experienced, it is great, and it is all about the feeling what you have inculcated. The both of these things are true and correlated to each other. The man is a slave of situation or the circumstances. It was a statement given by the Karl Marx. Everything is correct and everything is good, but it depends upon the situation. So, as per this song and as per this experience, two things are there. First, behavior and the cognitive domain. The cognitive, the word is no doubt little bit different,
but it is one of the excellent concept. Cognitive is all about the thing where we move from easy to complex. Is that clear? So it is all about the cognitive thing. A child is no doubt is a premature age. Levels are there. In early stage, it is a childhood, and then he grows up as an adulthood, and then he starts his journey. In literature, there is a poem, there are 7 stages of life. It is written by, it's a beautiful poem, a grammatical verse, and it is written by the William Shakespeare. The words of the stage. And the same way, it could be seen, it is the best theory to understand the concept of Piaget, where all these things, the William Shakespeare, the great dramatist, conclude in all the states in this thing, in this beautiful point. So in the same way, we can say that a cognitive concept is a very different aspect where we have to prepare the student to learn that thing. As in the classroom, in this training session, experience was the topic. And what happened? It is so related with the songs. Experience, what we have gained and what we have learned about it. Then we have to assimilate with the situation. It is all about the problem solving. First, if there is a bigger scene for a particular task, we have to move stepwise. First, we have to know the situation, then we have to draw the aspect, possibilities, and then assimilate to the situation. And fourth, we have to evaluate whether it could be good or bad. And finally, we have to move towards feedback, whether it could be effective or not, non-effective. So in the same way, the cognitive concepts draws these all things, the manners, behaviors, and the situation. In very childhood conditions, like the students who learns in nursery and some other classes, if you teach them or to give the order not to move there, that particular student moves towards that direction. Not to touch fire, he touches fire. Why? Because he doesn't know what could be happen and why someone is interrupting me in my activities. As the student, not to go towards the phone, not involve yourself in the mobile phones, internet, but they are spending more and more time. Whether you make an area mobile free zone, suppose in your bedroom or some other space or the corridor, you have conditioned that not to move there, not to take mobile phones in this time, but that particular time our intention increases. Why? And why? And why not? And finally, the condition for ourselves also not positioning. We are lose patience at that time. It happens as for the child also. Why someone is emitting my free space? And that is all about the condition where we have to learn it. I want to know the name who gives the condition, the theory of learning by doing. Any one of you? Please give the name of that person, the great person who gives the theory learning by doing. Anyone? Any one of you? It is Rousseau. If I am not wrong, then that theory
is the implementation age. You can implement. We have to implement at every level. Why in interrogative sentence we use no word or negative word? Why? Any one of you? Any teacher, please give the answer. Why we frame a question in interrogative related to negative sentence? What is the aspect of it? ये क्या indicate करता है? Anyone please? Dear teachers, you should try to give the answer. Yes, sir. We are not understanding the question. Sir, my question is very clear that why we put questions or frame a question in interrogative start with any negative sentence. Interrogative sentence is a question mark. We have to arise the question, but we have to include the negative questions. Whatever you are telling, sir, negative question mark. Can I repeat that question? It's not clear to you. No problem, sir. मेरा क्वेश्चन था नेगेटिव सेंटेंस में, तो नेगेटिव सेंटेंस ऑलरेडी नेम से ही क्लियर है, द नेगेटिव कॉन्सेप्ट इज देयर, लाइक नॉट टू गो देयर, डू नॉट, यस yes sir, that is the thing, but in real world the not word is not implemented. If you put negative remark in the progress card, can it be effective? There is an experiment. आँख बंद करिए, close your eyes, please close your eyes. आपको नहीं सोचना है कि आपके टेबल पे एक एप्पल रखा हुआ है। आपको नहीं सोचना है कि आपके टेबल पे एक एप्पल रखा हुआ है, उसमें छोटे छोटे पानी की बूंदें लगी हुई जो काफी खूबसूरत दिख रही है, लेकिन आपको ये चीज नहीं सोचना है, ठीक है? आपको ये नहीं सोचना है वो जो एप्पल आपके टेबल पे रखा हुआ है उसमें बहुत प्यारी प्यारी बूंदें हैं और बहुत ही खूबसूरत कलर का है, रेड कलर का, वाह, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है। प्लीज ओपन योर आईज। मतलब जितना चीज मैं बोली आप लोग ये सोचे ना, यही होता है बच्चों के साथ, आप नहीं बोलेगा वही करेंगे, है ना? तो एक्सपेरिमेंट करके तो दिखेगा तो इसका कंक्लूजन आपके पास तो बिल्कुल मिल जाएगा, राइट सर? Actually it is not learning, it is all about fun with learning. Somebody, there is a theory of someone, some great person, scholar, he has given a statement that if you love your work, then it becomes your passion. Dedication is nothing. It is all about how do we feel. Patriotism, it is not a written words or a written letters. It is all about how do we feel. It is all about empathy. So dedication is nothing. These are the letters, but it says a lot. Progress, it's not a mere letters. It's not all about alphabetical letters. It is more than that. Progressive approach. It is not a word. It's not a letters. It's all about the thing beyond your limitation.
If you think Henry Ford, the statement of the Henry Ford, if you think you are right. If you think it is wrong, then always it is wrong. Everything depends upon our state of mind. How do we do, how do we react, and how do we feel? That's all about the concept of cognitive theory. आज का खाना, आज का क्लास आपको कैसा लगा? Ultimately, it depends upon that. If it is good, your heart decides, because 3 H's: head, heart, and hand. Finally, this is all about the concept of psychomotor. But these all things includes a theory. That is all about the cognitive concept. How do you feel? आपने बच्चों को कैसा फील कराया? How they realize? Doctors 2 मिनट की फी हजारों में लेते हैं. And these things, and they give the time only 2 minutes and 3 minutes. The great advisor only gives only a few seconds or few minutes, but they charge lakhs of that. Why? Because of their conditions. One more example I am giving you. Sir, give me a pen, that pen. It's all about a pen now. It's a pen. सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? Who labors hard? This part. Yes, labors part. खिंचता है. Who खिंचता? Put the efforts a lot. ink खत्म हो जाती है लिखते लिखते. Yes, if I am not wrong. Yes, but at the end, who gives the credit? This 10%. And finally, and you keep it in this way. Which part looks? This is all about the 10%. It labors hard, 90%. But who gives the credit? It's 10%. And finally this, again 5%. It influences of us. What is the brand actually? Which is a brand? Clock. What's the clock? What's the brand actually? Then this is all about the 5%. But the whole thing, the whole concept depends upon that. आपने कैसा फील किया? It is all about the memory. Why the photographs is called photograph? Anyone, please? Anyone of you? Why the photographs is called a photograph? Anyone? Science teachers are there, math teachers are there, literature teachers are there. And please give me a very small question, a little question. Why the photograph is called photograph? Anyone? No? Sir, any idea? Ma'am? Anyone? Yes? Okay. Sir, the word photo means light and the graph means pattern or written. That's why a photograph, if we talk about ancient time, I heard an example of like X-ray or yes, good effort. Good effort, sir. Okay. Sir? Yes. Okay. Hello. Photograph is called as photograph because photo means light and graphs are the lighting. So the lighting of the light is known as photograph. Put the hands together. Let's go down there.
is a word. It's according to etymology, the word is graphene, and graphene is related to writing. Whole word associated with the Greek word photos, and graphene indicates the writing of photos. It means the writing of memory. That's why you preserve it in a particular album, or preserve it like pen drive or any other gadgets. Yes? That's why it's called memory. That's why it's called writing. It's all about the things what we have captured. It is all about the fundamental things which is related to our heart, where we use our brain to calculate these all things for a particular time or a particular date to preserve it, and later it became a memory. That's why it's called photograph. All about, I have given the example of this pen, it is all about the idea. An idea which is going to be changed. Whatever we learned, we got something new. It might be a theory, it might be a concept in near future. Learning has three stages. First, discovery, reception, and events. The first is given by Jerome Bruner, then David Oswald, and Robert Gagne. This concept is all about how do we feel about the learning, how do we feel about the concept. Teacher ने कैसा feel कराया? Before the lunch break, the session, when the session was going on, once the teacher said that the Guru was there in ancient time. No doubt it was that was the time of Gurus. But in recent time, there's a time of teachers. We have to assimilate it. We have to interpret it with the true demands of the student. No doubt, what might be the future of that particular student? तवे पे फ्राई होगा या वो ऑमलेट बनेगा. It isn't in our hand. But the thing is that हमने उन्हें कैसा फील कराया. अगर किसी भी सीन को याद रखना हो, we have to correlate with that situation about the movie or the series. कौन सी मूवी आपको टच की, किसके मैसेज आपको अच्छे लगे, किसका सॉन्ग आपको पसंद आया. It is all about the feel, the color, what do you like. It is all about the components of the color. It is not about the mistakes of the color. किसी को बहुत डार्क कलर भी बहुत अच्छा लगता है, किसी को बहुत लाइट कलर पसंद होता है. It is all about their feeling. But the final thing is that the touch, the heart. आपको कैसा लगा? It is all about that thing. The Jerome Bruner, the concept indicates that it could be a part of discovery, learning by doing. What do you think about brainstorming? Anyone, please? Have any idea about brainstorming method? Anyone? A topic is there. In the time of presentation, the sir has made a case study about the primary sector, secondary sector, and tertiary sector. It is all about the brainstorming. At that time, the students think about that. They are ready to think. Just approach of a man. There is a balloon in your table, and you have to put the things together. Someone have put it very beautifully. Some have connected this topic beautifully. But the concept was same. The balloon was same, the thread was same, but the entire thing was that your brain, which was different. The concept of APJ Abdul Kalam, the best mind always lies in the black side. It always thought that
there's a lack of time, we are not able to involve themselves. That is our mistakes. But a lot of spaces are there, a lot of chances are there. Finally, the thing is that it is not about what you have paid for that day. It is not what the management is demanding from your side. Think beyond it. What you got it from that day. It might be a day of your present. It might be a day of your theory, or it could be a part of your past. Everything is dependent upon our hand. How we made it. It doesn't mean that we traveled a very far away from to reach that particular destination. We came late. So many things are there. But think beyond of it. If anything, what we have got, if anything or any situation which could be present in our time, how we can react, how it could be felt, that might be there. It is a true discovery. Examination. Suppose theory 4 is coming very soon, and I think some are very well prepared for that exam, and some are also thinking of that exam. Do you think that is a part of your discovery? That is a part of your journey also. It could be any type of situation, any possibilities, but the thing is that how we have made our future. That is a part of discovery. Last is events of learning. Events. It is not about the day, time and classifications. It is more than that. It is a part of everything in learning. It is possible that when until death, the learning process is continuous. That's why it is called, it is a lifelong journey. And now, whatever the concept is given by the CBSE, it is all about the Socratic manner. What was the Socratic manner? Anyone? What was the concept of Socrates? During that time, ancient Greek period, ancient time, what was the method of learning? Any one of you? Anyone from your side? It is all about the question. The question. Ask the question from the students. Create the interest from the learners. It is not how much you learn, how much you know. This is limitless. The sky is not a limit. Here we have to consider that all things happen around the world and we have to take the challenge. In this time, the situation of CBSE is going on. It is so many methods experimented, so many methodologies are also given by time to time. It is going to be changed. As I told you, one of the concepts, blended learning. And in this presentation, there is a presentation about flashcard. It is all about the methodologies, one of the beautiful methodologies. You can present it and apply it in your classroom. Because it is all about the flashcard methodology, includes everything. It is also game-based, it is fun-based, it is experimentation-based, all about it indicates. There is not a barrier that particular subject, particular method, particular thing could be included. No. You can include it in your any subject. It creates a fun. It creates the interest. Right now we could observe that as per time is going to change, the interest is going to be declining. Rote learning, lecture method, these are outdated versions. As per your mobile phone, when you purchase a mobile phone from your store, little bit
few time or few minutes past, that model is going to be outdated on the same day. This is all about the experimentation. The whole world involves to make that version which is more effective than ever. And that topic and that concept was the concept of, do you know, the scientist? Anyone? He was Steve Jobs. Right now he was not with us. And he was suffered from pancreatic cancer. So many changes. It happens in the techno market. And right now we can feel it. Apple, before that, only a few persons knows about the model of Apple. But right now, I think most of you have the model of that phone 6. My question is that, how it comes in your life? Only you just pay the money and use that model. But there is a big story about that. Nokia, very bigger time, it was outdated of the market. Yes? Are you agree? But right now, it comes in the market with full-fledged preparation. It indicates that if you have some ability, if you have some concept, if you have changed yourself, then very sooner or later, no one is going to stop you. And that's all about the case study which is related to Nokia and Apple. That's why these are in market. Otherwise, on that time, that was not the scene. They are not among us. That's why it is all about the discovery, experiment. This is a part of learning. And in some bigger companies, they have given the chance to those persons who can involve themselves to that particular area. One more thing I want to add, that concept, the advertisement. No one likes it. Yes? No one likes the advertisement. If you have remote control, I think you might be changed if there is some advertisement. It might be possible. But do you think about the role of creative director? Those who paid that particular company $1 billion. That particular company paid a lot of amount for that particular advertisement. And the person who plays the role behind the scene is all about the creative director. In this time, there's a great singer. Sir, Saurabh sir, just little bit sing a song. The answer is already on that particular song. You have to guess a song. Guess a song of the movie and who made this composition. Who sung this song? Okay, basically who sung this song? Are you ready? And the song जिसने compose किया, composer. You have to answer two things. First, the name of the singer, and the second, name of the composer. Okay? तू ही तू सतरंगी रे, तू ही तू मन रंगी रे, तू ही तू सतरंगी रे, तू ही तू मन रंगी रे. जिसको आंसर दे रहे हैं अपना अपना हैंड रेज करेंगे, नहीं तो ऐसे भीड़ में फिर खिचड़ी पक जाएगी, है ना. इधर दोनों हाथ उठा लेते हैं. प्लीज एक बार जोरदार ताली मैम कीजिए. कंपोजर ए आर रहमान. एंड नाउ सिंगर. हाँ, सुखविंदर. नो
राइट आंसर इज सोनू निगम। एंड मूवी का नाम कौन से मूवी से ये सॉन्ग है, कौन बताएगा? यस सौरभ सर। यस राइट आंसर दिल से। इस मूवी में एक्टर एंड एक्ट्रेस कौन कौन थे पर्टिकुलर सॉन्ग में, कौन बताएगा? शाहरुख खान, उनके साथ एक्ट्रेस मनीषा वगैरह। क्या बात, थैंक यू सर। एक्सीलेंट, excellent. Put your hands together for yourself. Good effort. A.R. Rahman was the man. But before the journey in Bollywood as a singer, as a composer, what was he? He was a jingle artist who created a lot of jingles. First jingle he was created Airtel, that music. Yes, that was the jingle. But right now, was renowned singer, composer, musician, as a remarkable artist. That is called blended version of the person. Before and after. A man has drawn beautifully and a balloon before and after. That is the transversion. In multiple intelligence, there is a theory also. A person could be changed according to the situation. A dog, you can take the example of dog. Rat, they might be treated well. Due to good technique, due to good methods of teaching, that image could be changed their behavior. It's all about the theory of behaviorism. The horse, elephant, snake, so many animals are there. About whether you ready for take the challenge, whether you take transverse concept of yourself, as like Apple did it, as like Nokia did it. These are not case studies. These are real examples. What we can feel here. It is on your hand. Either you make 10% of the model or 90% of the model or 5% of the model. It depends on you. Thank you. Right now, you can enjoy the tea.
आंखें तरस जाएगी, जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था, तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। Thank you so much. मेरे साथ क्या क्या हुआ, खामोशियाँ आवाज़ है, तुम सुनने तो आओ कभी, छूकर तुम्हें खिल जाएगी, घर को बुलाओ कभी, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ, खामोशियाँ लिपटी हुई Thank you. फूल बन गए, वो रात आई तो नजारे बन गए, लिखे जो बातों से कोई नगमा कभी गूंजा, कहाँ दिल में के तू आई, कहीं चटकी कहीं कोई, मैं ये समझा तू शर्माए, कहीं खुशबू कहीं बिखरी, लगा है बुलबुल लहराए, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ वो फूल बन गए, वो रात तुझे 5 घंटा, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा रहा होगा, है ना जर्नी। तो थोड़ा सा हम लोग ने इनोवेटिव बनाने की कोशिश की कि चलो बोरिंग ना हो ये चीज। तो इसी तरह बच्चों को लगता है स्कूल जाना है, डेली स्कूल जाना है, चीटिंग क्लास है, कैसे वही साइंस टीचर, वही मैथ टीचर, वही इंग्लिश टीचर, वही हिंदी टीचर। अगर हम लोग थोड़ा सा इनोवेटिव कर रहे तो क्लास को थोड़ा सा, अब हम लोग देखिए इधर से बैठे बैठे कैसे बीच से रिफ्रेशमेंट हो जा रहा है ना, लेकिन बच्चों का एक ही बार होता है लंच पीरियड। उसके बाद लंच के बाद जो वो लोग परेशानी क्रिएट बहुत ज्यादा था। क्यों?
खर्च होता नहीं है, तब बेचारे लोग कहाँ स्पेंड करेंगे? स्कूल में। तो थोड़ा सा इनोवेटिव भी होना चाहिए, है ना? बीच में थोड़ा सा इनोवेटिव हो जाए, क्लास में थोड़ा सा 5 मिनट 2 मिनट बच्चों को दें, ताकि बच्चे जो हैं उस चीज पे इंटरेस्ट ले पाए। ठीक है, क्लास में अभी फिर से बलून मिलेगा, प्लेट बना मिलेगा, थोड़ा सा बच्चों की तरह हम लोग एक्टिविटी कर लेंगे, थोड़ा सा बच्चा बन जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो आपको भी बलून मिलेगा, थ्रेड मिलेगा। ठीक है, उसको राइट लेग में दाहिने पैर में बांधना है। जब तक म्यूजिक चलेगी आपको सर्कल होके घूमना है, म्यूजिक बंद हो जाएगा, एक दूसरे का बलून फोड़ देना। ये नहीं कि लोग मेरा बलून जो फोड़ दो, ऐसे मत करेगा। तो यूनिटी नहीं दिखाना है। मैं यहाँ पे अपना यूनिटी दिखा रहा हूँ, ये दिखा रही हूँ कि हमें नहीं फोड़ना है एक दूसरे का, नहीं, इट्स अ गेम। ठीक है, क्योंकि कल आपको क्लास लेना है, थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, है ना? तो फ्रेश होने के लिए थोड़ा सा एक्टिविटी जरूरी होती है, तो यू हैव टू डू। ठीक है, आपको बलून मिलेगा, प्लेट मिलेगा, दाहिने पैर, ठीक है, राइट लेग में बांधना है, म्यूजिक चलेगा, घूमना है, यू हैव टू मेक अ सर्कल। ठीक है, घूमना है, म्यूजिक बंद हो जाएगा, एक दूसरे का बलून फोड़ देना। हाँ, एक चीज और ध्यान, पैर उठाना नहीं है, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बैलून में अगर कम हवा भरा है वो धीरे धीरे छोटा हो जाता है, वो लोग भी कंटिन्यू करते हैं, वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर इन्होंने हाथ चलाया तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। किसी को हार्म नहीं करना है, चोट नहीं पहुंचाना है, बस गेम को एंजॉय करना है। ठीक है, तो ये चीज कीजिए और राइट लेग में उससे बांधिए। जिनके पास बलून है प्लीज आ जाए, ज्वाइन कर सकते हैं। मेक अ सर्कल मैम, सर्कल। Some more teachers please come. Please come. And please come. Join it. That's you. Please come. क्लैपिंग करिए भाई, Clapping. Get the big hands. Stop. Yes. Broke out. Yeah, good. Yes. जिनका पड़ता है प्लीज बाहर आ जाए, जिनके पास बलून नहीं है प्लीज बाहर आ जाए। Start sir. आइए मैम, this side मैम, take a seat. Yes, again, start sir, start. Fast, let's go. Make a circle. Good. No ma'am, sorry. Cheating is not allowed. Great. It is called absolute. Hey, here is a balloon. This time is come. No meter. Cancel. Start. सब नहीं
going to play. Save your destiny. Save your kingdom. सर कुछ लाइन याद आ रही क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ the group of two groups, the ladies and lady teachers versus gents teachers. Please come here. Please. Yes, start. Save your kingdom. हाथ नहीं लगाना है. Save your kingdom. Save your entirety. Then please, जिनकी सल्तनत अब नहीं है, प्लीज वो लोग अपनी सल्तनत में जाके बैठ. Save the kingdom. It's your sultanate. You have to save it. प्रोजेक्टर को देखते हुए प्लीज. The situation and the condition must be favorable. Get a big hands for the teachers fighting with their kingdom. Play, sir. Play. Don't use hand, ma'am. Don't use hand. संभाल के. Start. Save your empire shape. झगड़ा नहीं करना है प्लीज. Great. अरे टारगेट तो बनाए. जल्दी जल्दी. Play, sir.
देख रहे हैं कौन पुलाव देखा है सबसे पहले। लास्ट राउंड। मुश्किल है, इनका तो छिपा हुआ है। लगाइए मैडम। एक्सीलेंट मैम। ये मेरी बातों का फायदा प्लीज कम है। सर आपका कलर देख रहे हैं आप आइए तो। प्लीज इनको ज्वाइन कीजिए, सर को ज्वाइन कीजिए, सर को ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज प्लीज। मार्क्स सभी का होता है लेकिन नहीं है। There's a set of questions and a set of feedbacks. We have to put the proper choice. तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिल भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर
Last turn and final turn. Stop. Good. With the big hands. Well done. Well tried. Become the session, so it's your cooperation. सभी के पास 2 पेपर मिले हैं ना, एक फीडबैक है, एक क्वेश्चनर है, 2 मिला हुआ है ना? अच्छा।